into the like IT industries or service providing industries. So that time we have several kind of projects we have. Let's say like implementation project, support or enhancement project, rollout project, migration project. So these kind of different activities are there, but the configuration is the same only. But the difference is there, like the project activities are the difference. So what is mean by implementation? So whenever any company like they are not using SAP in previously and they want to go to the SAP in the future, so they want to set up end to end all the our SAP scenarios into their organization. So that time we goes for the implementation project. Okay. Same way, if any company already using the SAP and they just want to like create some new plant, new company codes, or something new store location, so that will becomes under the enhancement. Okay. And third one is the Okay. support. So support means whenever the company already using the SAP and real time they are getting some errors, like they are trying to create the PO and they are receiving some unwanted errors. So in order to fix that issues, so that would be fixed inside the support project. Like we have the incident and service request, two different categories are divided. Okay, in those like if we need to do any changes without creating the TR, so that could be comes under the service request, and we just suggesting user to follow this process, then the issue will be fixed. Then this will comes under the incident. Comes under the Okay, incident. okay incident. Okay, okay. Okay. So same Hmm. way like rollout and migration also. That migration means they want to migrate into the like earlier they are using ECC system and right now they want to use the S/4HANA latest system. So they are just migrating. So that would come as migration projects. Okay. Okay. So these are the Hmm. different projects we are using when we are working into the IT industries. Okay. So let's come into the our theoretical topics. So you I already explained you right what is SAP. So SAP is one of the enterprises resources planning application in which we are like all activities we will do inside we are doing into our organization. Okay. So Hmm. what is mean by SAP MM? So SAP MM stand for material management. In this module, like we are doing material and vendor related configurations. Hmm. So let's put the definition so that it could be help to you. So what do you mean by SAP? So SAP means SAP stand for System Application Product Okay, so this is mean by SAP. SAP stand for System Application Product in the data processing. SAP is an enterprise resource planning application. Okay, now what is mean by SAP MM? So whenever if someone asking you what is mean by SAP MM, so MM stand for material management, and in this module, like we are doing for procurement kind of activities, and material and vendor configuration will do. Okay, so SAP MM stand for material management. It is one of the most important model for the procurement. Procurement.
Okay, so SAP stands for material management. It is one of the most important module for procurement of the material. जब कभी भी हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं ना तो ये important module है. Okay, in this module material and vendor related condition are configured. Let's go. Like we have some advantages are there in SAP like whenever we are doing the activities. So the advantages like first of all we have the organization, right? So in organization we have the big warehouses or the store. So in that store like we have storing our all materials. So how we can identify like which material we need to take from which location, so that all will be like inside our configuration only. So this is one of the advantages, like we can control inventory management also, the first advantage. Second advantage, we can integrate the material with the order modules. Let's say like we want to product like some production from the material, so that time we have option to link the material with the production department. Same way we have option to link material with the sales department. We have option to link material with the finance department. So that could be the options. So this is the one of the main module, like when we are configuring the material, then only the sales team will be able to sell the material, then only finance team able to pay the material payment to the vendor. So all this will be possible when we are creating the material only. So this is the one of the most important module. Okay, and the third is manage the material at a right time in a right quantity at a right place. So let's put all this tip importance SCP The first important is control inventory management. The second is inventory created, market sales, other modules. These manage right value. We can say anything. Okay, so these three are the importance of SAP So first one I told you, like we have the inventory management, right? So like we need to store some material into our inventories. So that will be controlled using the SAP only. The second thing, we have we have option to integrate materials with the order module, SD, FI, PP, PM, QM. So this will be good possible. And the third one is manage material at a right time, at a right quantity, at a right place. We are maintaining some configuration. So based on that, like this all thing will be possible. We are managing material with the like perfect timing or the right how much quantity we want, same quantity we are receiving. We have the flexi options also. Same way quantity like price also. Okay, so these are the basic advantages of the SAP So let's go into the enterprise structure now. So what is SAP Those things are the clear, right? Simran? Yes, sir, clear. Okay. So let's move into our main like next topic, interface structure.
Okay, so basically, Simran, enterprise structure is defined based on the modules only. Like you different module using the different enterprise structure. Okay, so right now we are discussing for SAP MM. So we go for the SAP MM enterprise structure. So first of all, the common thing whenever we are using the SAP, the first thing we need to create the client. Okay, these are the some like finance team activities, but like in order to achieve our enterprise structure, we require those things also. The creation part is a finance, but we require those details also. So first enterprise structure start with the client. Okay. The second, the client always link with the many different company codes. So these two are the FI activities. Okay. Now below starting our MM activities. So like we have one company code, but inside the company code we have the several plants. Okay. So basically one company code against we can link the different plants. So that's why company code link with the plants. Okay. So after that, the plant inside the plant also we have the different storage location. So this one also one of the storage location. Okay, and these two are the common. This is for the MM, but these two are the common. We require the purchasing organization as well, but whenever we are purchasing material from outside of the company, and then the last one is a purchasing group, who is responsible to create this purchase order. Okay, so these are the enterprise structure in SAP MM. So this is the common question in interview. It is 100% asking what is enterprise structure in SAP MM. So we have the 6 steps are there. So once we configure those all, so our MM enterprise structure will be fulfilled. If same thing, enterprise structure for SAP MM, let's put here in order to configure it. Okay, same thing like if someone saying asking you what is enterprise structure for the WM, so below the storage location we are some more entries will be add, let's say storage bin, storage sections, count. So every module have different same way like ESG module enterprise structure. If someone asking, instead of purchasing organization they have the sales organization, they have the sales group instead of the purchasing groups. Okay, the same way, like all modules have the different enterprise structure. So this is for the SAP MM enterprise structure. So let's explain the into the document what is the client and those things. So okay, this one also I will explain you. Okay, so what we can do, Simran, first of all, like I will give you some theoretical details here. Once that theoretical detail will be finished, after I will show you those all how we can configure this all thing in SAP. I will show you that one. Okay, so Okay. let's follow this document. So this part is we clear. Same way, like they are saying, it is deal with the procurement process. Master data, we have the different master datas are there. Let's say info record, source list, material master, vendor master, quota agreement. So these are the master data. We can take master data like in refer only. So the next topic like we can take same way. Here we have the account determination and valuation for the material, inventory management, invoice verification, material requirement planning. So these are the MM topics are there. Okay. So Okay. Okay. let's show you into the SAP screen. Whenever you are logging into the SAP system, you can able to see this kind of screen. Just wanted to ask you, have you still login SAP system Yes, in I your have been company? using. Previously you were using that. Okay, so you know this basic thing. So this kind of layout will be show whenever you are logging in. So here we have option to put the client codes. So basically one client against we can store many company code detail. Okay, so different client code also we have option here. Then same way we need to put here our user ID and password, and below which language we want, that language also we can put.
If we want to see into the English language, then we just need to put here English. Same way, other languages are also, France is FR. So all languages are code are defined. Okay. So with this code, if you are executing, so system will be asking those things, like system will be showing the detail into that particular language only. So let's show you into that. So I already log in here. So let's keep that part. Okay. So before only, whenever you are coming in this screen, Simran, SAP main screen. Before that, system asking you this detail only. System Right. asking you to put the ID, password, and you have here option is there to change the password also. If you want to log off, you have option to log off. But in front skill, like we have these four option only: the client, user ID, password, language option, and the new password option. This one we can do only here. Okay, and remaining like log off, this kind we can do later also. So let's go the below. Once we put our details, then we can see, we can able to see this kind of screen. Okay, so here we have the different. For example, this is command bar. We can say this one as a command bar. Here we are putting our transition codes. Let's say MM03. So we are putting here, and we can able to do our activities. Okay, this is the command bar. Same way, same way in the tops the list are there, right? Menu, edit, favorite, extra, system, help. So that one we are calling as a menu bars. Okay, so these are the fix for like all transaction code. It little bit layout will be changing. So this is the like display screen only. So that's why lot of entries are showing, but the transaction code specific some entries will be reducing. Okay, and these are the standard toolbar, the below one. So let's say this one is a save option. Okay, if you want to minimize this screen, you can option this one. Then this screen will be not showing you to put the transaction code. If you want to put the transaction code, then we can again click on here. Okay, the second option is for the save option. Third option, if you want to go back from this screen, you can use this option. You want to extremely go back from the current screen, then you can use this second option. You want to cancel the current screen, you can use the third option. Okay, same way we have search Okay. option. Like after searching like same entry we want to search again, so second search we can follow with this way. Then this is a page up down options are there. We want to go extremely up, then we can click on here. We just want to go one page up, then we can click here. We want to go one page down, we need to click here. Extremely we want to go down, we can click here. The second, this one. Okay, so this one is for, so this one is for when we want to create new section. So that time we can click here. If I click here now, then same new section will be open. Okay, so this is Right. like not too much useful. This one just showing the which kind of systems are there, and then all the user and details only. Okay, so basically whenever you are using SAP system, that time we are using this one tool, and the this one just help, like we can see some information, and inside this like we have the some layout and those information we are storing in this. So you can see right now I am using SAP standard default this one theme. So that's why I'm able to see SAP theme. If I click here, then the screen layout showing in the red color. Same way in purple color. If I click here, green color also showing, gold color also showing. So these are the different layout we define. Okay. Same way, like you can see here, the themes are there. Right now I selected SAP standard theme. So here we have different. S4 HANA is also coming from here. Okay. So uh, front size, like we want to increase the like this name size, then we need to increase here. So same way, like you can open one by one, so you can able to see more details. Here we want to see that you we are putting the time like just plant code, then automatically system will be showing their description. So this will be achieved from this configuration only. Okay, so still it is clear, right? Yes. So let's go here. So you can see this one below is there. Na? This is called as title bar. So Yeah. whenever we are using different kind of transaction code, so that transaction code title will be showing in this here. Let's say same way here, the application bar, like inside the application, which kind of tools are showing, that one showing here.
Let me show you that one into the system. Let's try to create the PO. Okay, so PO transition creation transition code. Sorry, PO display transition code is a ME23N. Okay, if I come here, I can able to see this is a title bar, display purchase order. Okay, and these are options are there. Our title toolbar. This one. These options are there, right? Create, change, just display, print preview messages. So those will be achieved into this one application toolbar. Got it. Okay. Yeah. So let's go into below. This one I already explained. Okay, so here, if you are clicking on help option, Simran, so you have option to click log off also from system on itself you can log off. Okay, or else we have some shortcut also there. Actually, we are not following this way. We have many shortcuts are there. Let's say in order to open, you want to open new section. Okay, instead of clicking here, so what you need to do, you just need to put /n, so automatically this page will be same open and another page also open. Okay, you can see here my current page also showing here open. So just cancel this one. Okay, let's say I open right now MA23N. Okay, right now here is MA23N and I am canceling this section. So you can see currently only one section is open. If I want to go, if I want to cancel this section and open new section, so just click /n, automatically system will be showing you the back, totally back. You can see I come into the front again. And same way, if I going into the transition code again, simple recording is already started right here. Hmm. Recording is started, right? I don't know actually session is Okay, getting recorded or not. let me check because the recording advantage, like if you want to, so that's why, like, what is advantage for recording, like when you are like forward something, so you can, in order to help the recording also, you can clear your doubts. Okay, Yes. so Definitely. so from here, as I told you, if you are using Flash in, so we are automatically coming back from this current screen. And if you are using, instead of Flash in, we are using Flash O, and let's say MM03 I want to go. So what will be happen after this? System will be keeping this page as it is and system opening the next section, which one we want. Let's say MM03 is for the display material master. Okay. So if I click enter, automatically my new section is open. And you can notice here, my current section also as it is open. Okay, Right. so these are the some shortcuts are there, and some are also shortcut, like you want to execute without clicking on execute option, you have the in your keyboard F8 option is there, right? Also, one more shortcut I want to show you. Instead of clicking here, you want to go back, so just click F3 option in your keyboard, automatically you can go back. Okay, Okay. so these are the shortcuts are there, like in order to do our activity very faster, so that time we know some shortcut kits so that we can achieve our activities like too much faster as compared to the normal process. Okay, so a log off option also I show you. Just go here, we have the system option, click on log off, automatically you can log off. Status means you can able to see system current timing, user ID, all those detail you can able to see it. See, user ID is this one, language English, client 100, same way which date currently system, like you can say 70 is the date, current timing this one, system timing is this one, 1717 this one. Okay, so same way different layouts are given here. So these are the basic activity, basic module are there in SAP. So that module will be done this thing, but just for our information, we can check the system time also from here. Okay. So now go into the next topic. So what is mean by procurement processes in SAP MM? So let's put this topic.
Okay, so what is in the procurement process, Simran? Whenever we are ordering some material from outside our company, so that time we need to go for the procurement like purchase order, right? So that purchase order, all the processes will be achieved. That processes we are calling as a procurement process. So see the definition. Every organization acquire a material or services. So to complete this our business need, the process of the buying material or obtaining the services from the vendor or dealer in the procurement, the procurement process should be the done in such way that is it is order to correct the quantity with the proper value at the proper time. It is subdivided into the following parts. So we have the basic procurement also and special procurement also. Okay. So as I told you, we have two kind of procurements we are doing. One is we are purchasing some material from outside of the supplier, and that material we are keeping into our warehouse or store. So this is the first type. Second type, we are procuring some services from the vendor. Let's say your company have some big machineries, like if textile industries are there, so textile manufacturing machines are there, right? So those machines we require certain maintenance, or also in your company you want to do some house cleaning or painting. So those activities against we are just ordering from the vendor. Vendor will be coming into our company. They are doing their maintenance or services activities, but they are not storing any material into our warehouse. They are just coming, they are painting into our company, and they are asking money. Okay, so this is the service, and material means we need to keep into our warehouse, and after that we can pay to the supplier. So these are the dividation for these two. Okay, and in order to achieve these two, we need to follow the procurement process. Okay, so we have two kind of procurement process are there, Simran. So first one is a basic procurement, and second one is a special procurement process. So basis procurement means the simple procurement only. We just want to order, like let's say you have the stationery like pen or some nut bolt you want to order from the supplier. Okay, so those one we can order normally, like we just to create the purchase order with the standard recipe document type PNB, and automatically based on that we can take that purchase order. Okay, and the second is a special procurement. Special procurement means we have certain categories we divided into our SAPMM, like consignment process are there, same way subcontractings are there, third party, STO. So these are the different special procurement we divided. We are keeping this all topic in Dripper. Okay, don't worry. Right now this is for just basic introduction. So I'm displaying in just foreground. Okay, and whenever we are show, I will show you into the system. That time I will show you those also. So these are the special procurement. Let's say you have the farm. Okay, in that farm you are producing some tomatoes. So those tomatoes you are not going into the market and not you want to uh, sell yourself. Okay, so in that scenario what you can do, you can deal with one particular company code. So that company will be keeping your all material into their warehouse. Okay, and whenever they have some requirement, they will sell those material into the vendor, or they will consume those material into their self also. And how much material they consume, that material against we are receiving the payment. Okay, whenever I will taking this topic consignment process, that type I will explain you in the deeper. Don't worry. Okay, so let's again explain you. So basic procurement is clear, right? It is a process to acquiring good or services in the right amount at right time at right price. So this method is getting the services or supplier or equipment from the vendor seller at a right price, at right time, at a right amount. So it is terminate as a procurement. The quantity, so the same they are explaining also here. So let's go below. Okay, so these are the procurement cycle also, second thing, similar. So let's come here. We have two types are there. Let me do type below also. Okay, so okay, so one more question interviewer will be asking whenever you are taking an interview.
Okay, so what is mean by procurement cycle? The P2P cycle is different, procurement cycle is different. Okay, the process almost the same, but the like the naming conversation is different, and the some points also different in both process. Okay, if someone asking this question also common whenever in interview it will be asking. Okay, so what is mean by procurement cycle? So a procurement cycle basically starting with the requirement or information gathering. Okay, so whenever we want to purchase the material, before purchase, we are discussing internally into our company, right? We want this material. So that time we don't know like from which supplier against we want to purchase. Those things we don't know, but we know like which material we require. So those will be maintaining into one document. So that is called as a requirement or information gathering. We are discussing internally into our company. We are creating this one. So first step this one. Okay. Once our requirement gathering done, then what we are doing? Then we are contacting the supplier. So which supplier against we want to purchase this material, then we are contacting that supplier. Okay. Right. Okay. Once we contacted that supplier, the third thing is after that we need to background review like uh, how much quantity we want or those everything we need to background review. So quantity, price, those things. Then once supplier given their information, then next step what we are doing, how much price they given. So that price again we give some negotiation. Like if say a vendor saying they want to give this material into the 200 rupees, we are saying I want this material into 180 rupees. So this will be possible using the negotiation. Okay. So once negotiation Mhm. done, then order fulfillment. Once our everything done, then we are doing our order and supplier coming into material into our warehouse. Okay. One supplier come with material into our warehouse. The next step, we need to consume those material or we need to maintain maintenance those material. Consume means we can directly use those material or we need to if we done some maintenance, let's say building revolution, color painting. Okay. So after the painting into our building, our all color will be into the building itself, right? Where we no need to take those material into our store, right? We already use those material into the building. So that will be the this step like consumption and the maintenance and the disclosure. Okay. Okay. So see, or else I will explain you the very easiest way so that you can remember the names also. Okay. Instead of keeping this one, Simran, you can follow this which one I am writing in now. Okay. First of all, the first one is the common, okay, requirement and information gathering. Second thing, determine the source. Right now, what I wrote here, supplier contact, okay. Instead of supplier contact, what you can write here, determine the source. We don't know from which supplier against we want to purchase this material, right? Determine the source. Source means the supplier only. Okay. Okay. Once we know from which supplier against we want to purchase, then the next step, instead of this, select the supplier. Select the supplier or vendor we can put. Okay, vendor and supplier is the same. Okay, then PO processing. We are creating the PO. Once PO completely created, the next step we need to monitor the PO. Like supplier, we already ordered to the supplier. Then we need to follow up with the supplier. Currently, where is the material? From which date I will receive? So that will be achieved inside the monitor of the PO. Monitoring. Okay, once PO monitoring also done, then once supplier come with the material into our company, so that time we need to make some good receipt. So GRN is a short form for the good receipt number. Okay, so the next step, once we make the good receipt, then that material will be come into our store or our warehouse, right? So after that, we need to make the invoices against the good receipt.
So good invoice. Let's put here also good receipt if you are not remembering. GR. This is called as a GI. Okay, GI, two kind of GIs are there. One is a good issue. Good issue also we are calling as the GI. Good issue means already our warehouse material is there, and internally we want to take that material into the warehouse. So that time we are going into the good issue process. Okay, so GI, let's put into this one, and then the last step is the payment to the supplier. This is the FI activity. Okay, so procurement process is procurement cycle is clear, right? Similar. What kind of activities? This is the just we are not doing these activities into the SAP system. Okay, this is just for our information. How is business following their processes? So that they are following this way. They are discussing internally which material they want to purchase. Then once they decided, they are writing those things into the paperwork or something. So once they confirm, then they are searching which supplier against they want to purchase the material. Okay, then they have the multiple supplier list. So after that they are selecting one of the supplier from this list. One supplier selected, then they have the material and supplier, those informations are there. So simply after they are creating the PO. Okay, inside PO they are maintaining all the information, how much quantity they want for this material or everything from each plant against they want. Then after we just need to monitor the PO, like we just need to take a calling with the supplier, like when you are sending the material. So that will be achieved for the PO monitoring. Once supplier came with the material into the our company, so that time we need to keep this material into supplier hand into the our hand, and we need to keep this material into the our store. So that will be done. Once good receipt done, then after we can put the material into our warehouse. Okay, and after material good receipt done, then on behalf of good receipt we can make the good invoices. Okay, good invoices means it is just a verification process in which we can identify how many payment we need to give to the supplier. Once invoice verification part done, then this one last part is the FI part. FI will be sending payment to the supplier. This will be possible using the transaction code F-13. Okay, so this is the procurement cycle. Let's come into the document again. So see, which one is the hard? This one is the hard, or right now which one I explained? This one is a smooth. The second one. Correct. So that's why this one some like whenever you are also working into the organization, so you know Yeah. like easiest way how we can identify. Right, So right. let's next topic. Okay, see here also they are explaining determine the requirement. Once requirement determine that, then go to the requisition. One requisition means supply selection. Okay, once that part is done, then create the PO. Once PO create, then make the good receipt or good invoice, invoice verification. When that part is done, then payment to the supplier. So okay, so one more question will be asking. Do you use okay? If someone asking you how many type of basic procurement we are following into our recipe, okay, special procurement is a different, basic procurement is a different. Okay, so if someone asking you how many basic procurement we are following, so you need to answer we are following two ways of the basic procurement process. One is procurement for the stock or consumption. Okay, stock means for those material in which we need to keep the stock into our warehouse. So that is called as the stock. Consumption means services process come inside the consumption. We are keeping the services, but after that we no need to keep any material into our warehouse. Supplier will be coming to our company. They are doing their maintenance activity, and after they are asking money only. Okay, and the second Okay. one is internal and external procurement. Okay, so what is mean by external procurement? So external procurement means we are purchasing material from outside of the supplier. Let's say you want to purchase the pen from the supplier. So that is supplier is
that is called as the internal external. Okay, and internal means you have your own company, but same material is available into the different plants. So that scenario, what you are doing, you are just asking for the another plant person, please give your plant material into my plant. So we are not purchasing from the outside of the supplier. We are just purchasing material internally into our company. So that is called as the internal procurement. Clear, Simran? Yes, sir, clear. Okay. Yeah, we're going to do types. Now the same thing they are explaining differently. So I already explained you the easiest way. So you no need to go inside deeper. Okay, this is just two word answer you need to give to the interviewer. Okay, so this is called as the basis procurement. Okay, here let's what we can do. This one we can keep a book. Okay, and then after this one. What is my basics? So basic is clear. Now we can go for the second one. Special procurement. Okay. Okay. So as I told you, what is in the special procurement process? Special procurement process means special stock are the stock that are managed differently as those stock did not belong to the company, and these are being kept in the some particular location, specially procurement or special stock divided into the subsequent area. Okay, so we can distribute the special procurement process with this way. So first one is a whenever someone asking you how many types are there in special procurement process, so you need to answer them. First one is a consignment process. I will change the names also. Consignment process. Second one is a third party process. We can take this all topic, okay? Differently, don't worry. So the third topic is a pipeline. Pipeline is not too much using. Pipeline only using for the like oil and like chemical like oil only oil and like those things will be going inside the pipelines, chemical activities. So that's those companies only using the pipeline process. Okay, returnable stock or transport package. We want to transfer the material into the we want to return the material into the supplier. So this one will be achieved inside the return transport process. The five is subcontracting. This is the most one of the most important process. Subcon, we can say short form subcontracting process. Subcon. Subcon means this is daily activity kind of things. Every company are using subcontracting. Okay, let's say you have the motor. So that motor you want to do some maintenance from the outside of the company. So that will be achieved using the subcontracting process. Okay, and the last one is the most important also. Every time we are not purchasing material from the outside of the company. If same material is available into the different plant, but with the different location, so we can take extra. Like sometime what happen? Let's say one material is there. We have two plants. One company got two plants. One plant is in Chandigarh. One plant is in Pune. Okay, and the company location is the Delhi location, let's say. So that scenario, what we can do,
if same material is available into the Chandigarh location and we want this material into the Pune location, okay? In Chandigarh location, extra quantity is available. Chandigarh location people are not consuming this much quantity. So in that scenario, instead of purchasing this material from the external supplier, we are asking to our internal plant person, please give this material to me, and then I can use that material. Okay. Okay, stock transfer using. Mhm. Can put stock transfer process only. Okay, so these are the standard special procurement process, Simran. So these are the now they are showing into the configuration. Okay, what is the configuration we are maintaining? So see, first of all, this is the implementation gauge. Okay, so instead of showing here, I will show you into the SCP only. So this is the transaction code. This one is there transaction code level. Okay. Now this one all access is there for the end users also, which person using this SAP. Okay. But some things are there which one only using the consultant peoples. So right now you need to go inside the SPRO transaction code. Once you go here, then you have option. Click on SAP reference IMG. IMG means implementation gauge. Okay, so just click here. Okay. After clicking, this all are the configuration. In this, whenever you are doing any changes, then system asking you to create the transport request number, and that transport request number you can send to the another system. So that system against you no need to make same changes. System automatically copying the current changes and pasting into the next system. Okay, so this authorization only there for the consultant people only. Those like those manufacturing the ACP application or those maintaining the ACP application, those people only the authorization. Business end user don't have authorization for these configurations. Okay, so once we come here, we have the lot many things are there. This is not just for ACP MM. This is for whole ACP. Okay, different modules. So see here, you can see some finances activities are there. So same way enterprise structure are there. Enterprise structure means we already given the enterprise structure, right? Client, company code, plant. So those will be defining here only. Okay, and here Okay. below is our enterprise, like some purchasing group you want to create. So that will be create inside the material management. So we need to check only this one. One is the material management and another is the enterprise structure. And something is there also, logistic general are there here also. Somewhere logistic general name kind of is there. Logistic execution, this one. So here also some our configuration is maintained. Okay, you can see material master is there. Mhm. Same way like different other modules also that this is not just for this is common for all. Okay, logistic general means it is a warehouse activity. So warehouse, warehouse always require the material. So that is in our part also there. But same way you can see other like batch management, handling unit issues. So these are proper warehouse managed companies using. Okay, so let's go back from here. Now coming to our document again. So you can see we come still here. Just give me 1 minute. Yes? ओके, सो सिमरन अब तक तो पूरा समझ में आ रहा है ना कि कुछ जी फास्ट जी वगैरह सर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, सब आ रहे हैं सर। ओके, और कुछ भी डाउट हो ना तो आप बीच में रोक के पूछ सकते हो, ऐसा कुछ मतलब कि है नहीं. ओके, राइट राइट। और ये थियोरेटिकल पार्ट है. तो थियोरेटिकल पार्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जब क्लियर होगा तभी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो वो समझ पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो
B, let's see, we have the different. So right now you can see these are the documentation. So I already given the enterprise structure, right? So they are given here, but we already given the enterprise structure. So right now we can find the client is a common thing. Okay, this is not our activity, so we can keep the client. Okay, we can company code also not our activities, but in order to know how we can create the company code, I will show you. Okay, this is not our activity. I will again saying, okay, whenever someone asking you into the company, please create company code for me. Clearly say them, this is not our MM activity. Our MM activity will be start from the plant, storage location, and purchasing organization and the purchasing group. Okay, Okay. so let's go into the system. So I am going extremely up. So in the top 10, you can able to see the enterprise structure here. Okay, inside the enterprise structure, we have the definition. So what is meant by definition and assignment? So definition means we are just creating, and assignment means we are linking to the each other. Right now from definition, you are creating the company code, you are creating the plan, but system don't know which plan come inside the which company code. So how system will be identified based on the assignment. Assignment against we are linking those to each others. Okay, so see, I am opening the financing and accounting. So here you can see here also clearly they mentioned financing and accounting for the company code. Okay, our MM will be start for logistic general and the material management. Okay, so you can see if I click here, I have option define the company code, define copy delete check company code. Same way different business area, function area. So FI people will be creating those configurations also. Okay, this business if Okay. like you are creating the purchase order also, so that time some based on the which kind of purchase order it is, if you are using the cost center, so that time system asking you the function area also. So that time we need to contact the finance person, like we purchasing team, like we end users will be contacting their financing person. Please give me the function area or business area also same, these are the configuration needed that time. Okay, so here if you click here define company code, so you can able to see here similar lot many company codes. Okay, so see, right now this one is for the someone created. So we have two ways to create the company code. The first way, from here we have just option to create the company code and give their address and the name only. If I click here, okay, you can see here one more address detail it's showing. Let's go back, selecting the line, address style need to be shown here. Okay, anyway, so here other entry means next company code. Okay, so here Simran you can able to see, we are only able to see the detail like company name, name two. If name one against we are not able to fill our all the description for the name, company name. So same we can put name two also remaining. Okay, or else we can keep both also same. Same way, we need to give here the street means address for the company code. So these are the address. Company currencies also they are currently given INR. Okay, so this is just normal way to create the company, just the address. Okay, but basically whenever someone asking you to create the company code, so that time what we are doing, we are clicking here edit copy delete check company code. Once we execute here, then you can see copy delete check company code. Just click here, double click, then after you have option here object organize copy object organization. So what is the advantage for this? So lot many FI configuration is configured for the company code level. Okay, but if you are creating the company code with the normal way, just create the company code and put the address, so system will be not copying the background configuration. Okay, so in order to remove the errors, what we are asking for the business, please give me the reference company code so that we can copy all the reference parameter from that reference company code. Okay, so Okay. see, right now I'm using 0001 is my
SAP standard given company code as a reference company code. Okay, and same way SRM1 I given the new company name. Okay, Simran 1. Okay, so just click enter. Then see system asking you, do you want to copy those all GL account information? Click yes. Then system asking, do you want to controlling area, do you want to assign to this, like all this configuration, do you want to assign? So yeah, we don't know like what is meant by controlling area or those things. This will finance people know. So that's why just click yes. Again, system asking GL account. You can see the reference currency is a euros for this particular company. So just click yes. The system will be coming in. So now here system asking you to put the currency. So right now this is the most important. Okay, so I don't know which currency I can use for this one. Either it is INR or the euros. So local currency, let's put INR. Let's see what happens. Okay, I given INR. Or else just put euros only. I don't want the error, so that's why. Anyway, we can see later. Okay, just click enter currency, and then you can see certain data was not copy. See the long list. Okay, if you want to see how much data copy, how much not copy, we can see from here also. Just click enter. Customizing in consultancy, click enter. System asking, do you want to transfer the number range? Basically, we are saying no in real life because every company we want a different number range. But right now, I want to copy the number range for the 0001 company code so that I no need to define the same thing. So just click enter. Do you want to copy the number range? Click yes. I want to copy. Now system will be taking a little bit time. You can see below is counting started. System copying all the parameters. Okay. Or Abhi, this is the most important thing. So this is my first change now. So for my changes, I will create my own transaction code. So let's see. Paste. Okay. So Simran, note here, this is also one of the information. Whenever you are working into the company, for that time, we have three systems basically we are using. One is a development system, second is a quality system, third is a production system. The business end user only have two system access. One is a quality system and one is a production system. Okay, quality system only the IT people have access, but end user only the production system access only. Okay, they don't have the quality access also, but if they know the configuration, so they are in higher management or IT team, so people will be give them a quality system access also. Okay, so that scenario, what we need to do, this is a, let's say this is a development system. Development system access we only have the consultant people. Okay, once we done our changes, then we can test into the development system only. After testing, we can move the, oh, here we need to put the transport target system. Okay, so I will give my next transport target system the quality system. Okay, once I move this transfer into that quality system, automatically how much changes I done inside this transfer request, automatically sending into the next quality system. So that after we can ask business, please test as per your requirement, we already created the new company code. Please test if that company code is created success like correctly. If you want to modify anything, please let me know. If they are saying yes, your changes is correct and they approve, then after final, we just need to transfer this transfer requests into the production system with the basis team help. Okay, so just click enter. This is my transport number, Simran. Just click enter. Every time new number will be generated.
You can see 78% table copy 97. Again, system asking me to click on the system. Just click yes. Just click again, enter. Again, same thing, yes. Enter, I guess we need to click several times. If I click no, then it will be stop here only, but I am not sure like it will be interested. So that's why I am clicking on this. Let's try a few more time. Okay, so just click no now so that it will be stop. Come on. Same, it is asking again. Company code already created, I am sure. But this one. Okay, anyway, we can cancel this one from here somewhere. Okay, company code 000 copy for the new company code is RM001. Okay, so now if you can cancel this one, edit company code details. So you can see here, if I search SRM1 company code, I can able to see my company code here. Okay, just click on this pencil symbol. Okay, and then after you have option to click on the address. Inside the address, you can put the different address like, see, let's say uh let's put Tata Motors. Okay, so here we have option to select any company code or something. So let's select company code. So short description is a Tata. Posting code, you can put anything. Here the currency, you can put country is India. So just select. Inside this India, we have the different states are there. So all state have the different uh, codes. So you just select any company code, then after select the language, just hit enter. Okay, so now you want to change this address also, you can change it. You can just click here, Tata Motors. Okay, you can see this planned currency I given euros, so that's why it is showing euros. Okay, so just cancel from here, save it. Okay, so the company code creation part is done, right, Simran? See, Yes. if you click here, you can able to see your company code. Okay, I just changed the description. What one is one? See, it need to be tasked a transport request number. Okay, now it's saved. Why it was not saved previously? Just saving and just going back from here. Okay, if we are coming here again, then you can able to see in the, oh my god, I changed Tata Motor name for the first time only. Oh,
What is the name previously? I don't know. It was SAP SC शायद SAP EC EC. That's good. SE Like this. no SAP SE yeah I don't want to touch the SAP transaction code, so that's why. Okay, so just going back from here. So our company code is successfully created. Okay, so just come back from here and now minimize this one. Okay, so same way we need to go the logistic general. Inside we have option to create the company code. Same way company code also we can create, just creation is different, and copy from existing company code, existing plan, so that is also the different. Okay, so what you can do today, you can just practice those sections. Okay, which one we taken. So then tomorrow onward we can create the plan, so location, purchasing group, and purchasing organization, the next topic. Okay, because if you are taking the long topics now, Simran, what happen, we can forget the previous topics. So better in order to remember the previous as well and the next as well, so we can do it this way. right तो आपने कंपनी कोड क्रिएशन का प्रैक्टिस तो नहीं किया बिकॉज आपके पास सर्वर नहीं है, राइट? बट थेराटिकल जो टॉपिक्स अपन लोगों ने लिया था उसके ऊपर तो आपने एक बार ओवरव्यू किया होगा कि एक सर क्या लिखा है, So करेक्ट? I wanted to ask, I was studying this and परचेज ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइप्स थी आगे, तो वो थोड़ा बता दो आप मुझे। कैसे एग्जैक्ट? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स हाँ लाइक हाँ, प्लांट टू प्लांट, कंपनी कोड, अच्छा। ऐसे क्रॉस कंपनी। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है ना कि जैसे एक वे रहता है, एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेवरल प्लांट्स को लिंक कर सकते हैं। ओके, बट सेवरल प्लांट जो है ना, मतलब कि एक परचेस वो दूसरा एक सेम कि अपने पास दो ऑप्शन रहता है कि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड को भी डिफाइन करते हैं। वो आपको दिखाऊंगा ना मैं, आप वन बाय वन जा रहे हैं ना अपन लोग। ओके अभी ओके। आज आ जाएगा वो, टेंशन मत लो। ओके, सो अभी आ जाते हैं प्लान की ओर। तो प्लान क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कंपनी में प्लान क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर जोन रहता है। लेट से कि गुड़गांव में एक मेरा कंपनी है, मान लीजिए कि मेरा एक टाटा मोटर्स का कंपनी है गुड़गांव में। ओके, बट उसके अंदर ऐसे डिविडेशन किए जाते हैं कि इनसाइड कंपनी कंपनी का एक बड़ा लैंड रहता है और उसके अंदर प्लान डिवाइड किए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जोन के अंदर जो एरिया आ रहा है ना उसको एक प्लान नाम दिया जाता है। और उसी प्लान के अंदर अपने स्टोरेज लोकेशन पे आएंगे। प्लान एक बड़ा से कंपनी को एक सबसे बड़ा सेक्शन रहता है, उसके अंदर सब प्लांट्स रहते हैं। जैसे 5 प्लांट्स है। ओके, और वो 5 प्लांट को भी आप उनमें से एक प्लांट पकड़ो कौन सा भी, और उसके अंदर स्टोरेज लोकेशन रहते हैं मल्टीपल। तो आप एक भी रख सकते हो और एक से ज्यादा भी रख सकते हो। ओके, सेम में। और उसके बाद जब हम परचेसिंग की एक्टिविटी करते हैं ना, उसके लिए लगता है अपने को परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करना और परचेसिंग ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज उससे अब उन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है परचेस ऑर्डर के लिए, कौन से ग्रुप के अगेंस्ट से क्रिएट हो रहा है। ओके, तो परचेसिंग ग्रुप है। अब उन लोग एक पर्सन का नाम दे सकते हैं, आपका भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से। तो आपने क्रिएट किया है, तो वो परचेसिंग ग्रुप अब जब हम लोग पीओ बनाते हैं ना, उस टाइम में पीओ में लिंक करना रहता है। तो उसके बाद उसके बेस पे अपन लोग ट्रिगर कर सकते हैं कि किसने ये पीओ बनाया है या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। ओके, सो लेट्स गो इनटू द एसएपी। तो सबसे पहले कल अपन लोगों ने कंपनी कोड क्रिएट किया था, सेम में अपने को एस टी आर ओ में जाना है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाना है उसके बाद। ओके, और यहाँ पे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में फिर से कल भी इधर ही आए थे, राइट? इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना अभी भी, कल भी डेफिनेशन में आए थे, अभी भी डेफिनेशन में जाना। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने को अभी जाना है लॉजिस्टिक जनरल में। ओके ओके, तो लॉजिस्टिक जनरल में जाने के बाद यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं।
डिफाइन वैल्यूएशन लेवल। तो वैल्यूएशन लेवल वन टाइप की एक्टिविटी, तो उसको बार बार नहीं किया जाता। तो डिफाइन प्लांट। ओके, तो यदि मैं यहाँ से प्लान डिफाइन करूंगा तो कंपनी कोड के जैसा ही रहेगा कि सिस्टम मुझे प्लान क्रिएट करने देगी, बट वो प्लान का यहाँ पे मैं खाली एड्रेस और वही डाल सकता हूँ, और बाकी जो अदर लिंकेज है वो मुझे मैन्युअली दूसरी जगह पे करने पड़ेंगे फिर से। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूंगा ना, मैं इधर से ही डिलीट कॉपी डिलीट चेक प्लान में से एक रेफरेंस प्लान उठाऊंगा। तो लेट्स से मेरे पास 0001 एक प्लांट है। ओके, उसी प्लान को मैं इधर से अभी अपना नया प्लान बना रहे, जैसे SRM2 ये अपना प्लांट है, SRM1 अपना कंपनी कोड था, SRM2 अपना प्लांट है। ओके, जस्ट पुट एंटर, कल के जैसे एंटर एंटर करके जाना है अपने को, नंबर इंस्टू कॉपी। ओके, तो ये फिर से अपना वही, ये किसी का अलग टीआर है, अपना अलग था, अपना टीआर नंबर मैंने नोट नहीं किया, तो मैं गेस फिर से टीआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या नाम डालता आपको याद है? कल टेस्ट डेट डाली थी शायद, 17 वाला, 17/04/2024। ओके, 25। तो ये सब नाम देना पड़ता है सिमरन, तो ये नाम की बेस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टीआर के अंदर क्या चेंजेस है। ओके, ओके। तो यहाँ पे वही मैं कल जैसा बोला, टारगेट सिस्टम दो किसमें आपको नेक्स्ट चेंज ये चेंजेस लेके जाना है, फिर जस्ट एंटर मार दो। एंटर मारने के बाद वो नाम आ गया। अभी ये नाम को मैं ना कहीं पे नोट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम टीआर के अगेंस्ट अपने चेंजेस सब हम लोग डाला जाएंगे। ठीक, सो फिर से इसे में आते हैं, इसे एंटर करो। जैसे करके जैसे वो टारगेट सिस्टम पूछेंगे, एंटर करते जाना। ये प्लांट सक्सेसफुली कॉपी हो गया है, इसको SRM2 को। ओके, ये अपने को कंफर्मेशन आ गया। जैसे एंटर करो, एंटर करने के बाद यहाँ से बैक निकल जाना, फिर से यहाँ से भी बैक निकलना। अभी फिर से अपना डिफाइन प्लान फिल में जाना। ओके, डिफाइन प्लान फिल में जाने के बाद यहाँ पे अपना प्लान रखना SRM2। SRM2 में जाने के बाद लेट्स फाइंड आउट अगेन SRM2। ओके, तो उसने क्या किया, we given reference plant as a 0001, so system copying all data from that, like address and those information also. Okay, so what we need to do, we just need to click here, we need to go into the address, and based on our new address we need to give the address here. Okay, ओके। so ओके। let's click here also Tata Motor plant, let's put here data plant. Okay, so it's base same way, like you just need to go the address, like this is the local address, state, or here their number, along with like posting code, what is their posting code, and automatically if we go the posting code, city name will be came. Okay, uh, and also here you need to give the country region. So our country is India, and between those we have multiple options. So right now I am selecting 13 for the master, and just here you need to select the language as well. Why we require the language? Based on the language only, like all whenever, like if you maintain here another language, so system can able to understand this plant is created for this particular language, so we can only able to see the information for this particular language. ओके, तो जैसे एंटर इट, एंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको वही नाम चेंज करना है, टाटा प्लांट, कॉपी सेम, go into the next section, just paste it, it's a back, and just
सेव इट। तो अभी उसका नाम भी है ना, उसके हिसाब से शो करेगा जो आप उन लोगों ने डाला। ओके, तो ये है वैसे अपना प्लान होता है क्रिएट। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपन लोगों ने कंपनी कोड क्रिएट कर लिया, प्लान क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है उसमें, स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना। तो सेम वे, जस्ट मिनिमाइज दिस and open our material management now. Okay, inside the material management section we have option maintain the storage location, and same option we have the maintain the purchase organization also. Okay, so just go here, click on the executive option for the storage location, and whenever you are creating the storage location, before creating the storage location, system will be ask you for which plan behalf of you are creating this storage location. So before creating, you need to give the plan code here. So SRM2 is our plan. So I just give one name and just put it enter. Once you put enter, then what happened? We copied our plan from the storage from the plan 0001. So system automatically copying the 0001 on all plans here. Okay, so let's create our our own more. So just select the line storage location and click on the copy entries. And then here, instead of 0001, let's put receive for doc ROD. Okay, and give the name receive for doc. Okay, and here valid means if after our plant, like what happened in organization after many years, if we are not using that storage location now and we want to close that storage location, so we cannot delete the storage location because previously we have created a lot of purchase order and those entries, so system will be not allow you to delete that storage location. So what in that scenario, what we need to do, instead of this, we just need to include no longer valid option, so that whenever you are creating the purchase order, that time system will be you are receiving one error, this storage location no more longer valid. Okay, so these are the functionality SAP given. So right Okay. now I am just selecting valid because I newly creating. So just put it enter. Okay, so all the information come and system showing one entries, one new entry come. Okay, and just put it save. Once you click save, same TR number is coming all over. Just put it enter, and after that you can able to see here. Just go back from here and again come here. Put your plant SRM2, and you can see our ROD also showing here. Clear, Simran, still? Yes, sir, clear. Okay, so now just go back from here, and the next step is our organization structure is the maintain the purchasing organization, right? So just execute this one. Then you have the multiple option to create the purchasing organization. Either you can create directly, but if you are creating directly, then system will be not copying same the linkage. Okay, so better in order to copy the linkage also. So what we are doing, we are taking one of the purchasing organization as a reference purchasing organization. Always in business also we are asking these things. Okay, so just select double copy option, copy as, and here you can give your purchasing organization. Let's put SR Simran. Simran 3. Let's put no. I want to create one more plan. So location name. We can give the different one. Let's put okay, same storage location name we can give. Which one we give on the plan name? So SRM1 we give on the plan name, right? So same name I am given for the storage location as well. So just put it enter. Okay. After putting enter, what happened? Here you can able to see the detail. Okay, let's one second. I am coming starting again beginning. Miss something this again coming here. Just selecting the line, clicking on copy option. Okay, it's here only. So just putting our description, and here you need to give your own description. So same like Tata Motors. Uh, just let's put okay. So
Just put it enter. We can able to see our purchase organization here. Now just put it save. Okay. So our purchasing organization also successfully created. Then what is our next step? Our purchasing group. Okay. So what we can do before creating the purchasing group, we can link those all education also. Okay. But okay, we can go by step. So just stay this one as it is. Search here the material management below. Okay, here you can able to see the material management. Expand this one. Inside material management, we have the purchasing rate. Expand purchasing as well. And here we have the material master. Expand this one. Define purchasing value. Add entry add for the item without the material master. Click execute. And here you have the material group. Sorry, this is for the material group. Okay, let me remember here. General setting for the material management. Somewhere like here only we are able to see define purchasing value key is a different one. Yeah, this is whenever we are getting the material, that time it will be as this one we executed. Let me just give one more time. I forgot actually. If we are coming to the purchasing here, create purchasing group name kind of, yeah, see this one it is okay. It is small name, so that's why. So just click execute. ओके, सो हियर परचेसिंग ग्रुप क्या होता है ना, मैंने आपको बोला कि जस्ट एक पर्सन रहता है कि अपन उसका नाम भी डाल सकते हैं या फिर कुछ एरिया का नाम भी डाल सकते हैं। तो उसके अंदर अपने को उसका पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करना रहता है, जैसे कि उसका टेलीफोनिक नंबर, उसका फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल दोस इंफॉर्मेशन। ओके, सो Okay. अभी अपन लोग ये परचेसिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंट्री। इस सर ये जस्ट नाम डाल दिया। नाम डाल देते हैं टाटा मोटर्स, और लेट्स से योर नेम, सिमरन आपका नाम डालते हो, बिकॉज एक पर्सन का ही नाम रहता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने जहाँ तक देखा है ना, तो जो उधर जो एक्टिविटीज करते हैं ना, पीओस की एक्टिविटीज, तो उन्हीं का नाम रहता है। ओके, आई जस्ट गिव द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर फॉर द परचेसिंग ग्रुप, लेट्स से मोबाइल नंबर, और कुछ भी आप जो जहाँ पे आपका सीट है वहाँ का टेलीफोनिक नंबर रहता है वो, या फिर फैक्स नंबर, सेम नंबर यहाँ पे भी डालना रहता है, टेलीफोन नंबर, ये एक्सटेंशन का जैसा ऑप्शन है। और यहाँ पे अपने को डालना पड़ता है ईमेल आईडी। ओके, तो यही ईमेल आईडी का, ये इसका एडवांटेज क्या है ना, पहले तो अपन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सिस्टम को समझ में आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है पीओ का। और दूसरा, जब भी अपन लोग परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो एसीपी में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी दिए हुए हैं कि अभी जरूरी नहीं है कि जो वेंडर है वेंडर के पास एसएपी होना ही चाहिए। तो उस सिनेरियो में क्या होता है ना, वेंडर को कैसे समझ में आएगा कि अपन ने उसको रिक्वेस्ट डाला है कि हमें यह मटेरियल चाहिए। तो अपन लोग है ना, आउटपुट डिटर्मिनेशन बोल के एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसके अंदर अपन मल्टीपल आउटपुट रहते हैं अपने पास। तो वो आउटपुट जैसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उसके हिसाब से वो पीडीएफ जाती है वेंडर को। तो सेम वे एक अपने पास ऑप्शन भी है परचेसिंग ग्रुप का भी। तो उसमें यदि परचेसिंग ग्रुप का नाम डाल दिया ना, और ऑटोमेटिकली सिस्टम जैसे भी ट्रांजेक्शन कोड सक्सेसफुली मतलब पीओ क्रिएट हो गया, तो एक पीडीएफ अपने को जो परचेसिंग ग्रुप पीओ में लगा है ना, उसको भी उसके ईमेल पे जाता है। तो ईमेल पे कैसे जाएगी, यहाँ पे जो ईमेल रहेगा ना, सिस्टम उसी ईमेल को उठाती है। समझ गए ना इसका Okay. इम्पोर्टेंस? जी जी जी, got it. तो जस्ट गो बैक फ्रॉम हियर। ओके, सो
अपना परचेसिंग ग्रुप भी हो गया, तो एक प्रकार से अपना नॉर्मल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। बट अभी वो सारे ना सेपरेट सेपरेट पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं कि प्लांट सोयल लोकेशन को तो पता है कि वो कौन से प्लान के लिए क्रिएट किया गया है, बट प्लान को पता नहीं कि वो कौन सी कंपनी कोड के लिए क्रिएट है। सेम है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी पता नहीं कि वो कौन से प्लान या कौन से कंपनी कोड के लिए क्रिएट किया गया है। परचेसिंग ग्रुप जो है ना वो कॉमन रहता है, वो मतलब कि यूज करते हैं कहीं पे भी। ओके, तो जस्ट गो अप अगेन, वहीं पे आते हैं अपन लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। तो अभी अपन लोगों ने पूरा डेफिनेशन का फिनिश कर लिया, तो जस्ट मिनिमाइज दैट वन एंड द मैक्सिमाइज द असाइनमेंट। ओके, तो कंपनी कोड का तो अपने पास कुछ लेना देना नहीं है, अपन जाते हैं सीधा लॉजिस्टिक में। ओके, तो लॉजिस्टिक में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास कि असाइन प्लान टू द कंपनी कोड। तो जैसे भी इस पे क्लिक करते हैं ना, तो अपने पास ऑप्शन रहता है, जस्ट गो हियर, सिलेक्ट आवर प्लान SRM1, SRM2 सॉरी, आवर प्लान को। ओके, तो अभी करंटली अपना डेटा ऑटोमेटिकली आ गया होगा। वाई, बिकॉज ये क्यों आया होगा? बिकॉज अपन लोगों ने जो प्लान क्रिएट किया था, आपको याद है अपन लोगों ने 0001 प्लान के ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी को क्रिएट नया प्लान राइट क्रिएट किया, राइट? तो जो राइट प्लान क्रिएट करने का वही मतलब है ऑन बिहाफ लेने का। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करते हैं ना, सारा वो प्लान का डेटा मतलब कि कंपनी कोड को उसने लिंक कर दिया, और भी कुछ अदर कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं तो उसको भी वो वैसा ही लिंक कर देता है जैसा कि रेफरेंस प्लान का था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना नाम आ गया, कंपनी का नाम भी यहाँ पे है, तो ये लिंकेज हो चुका है। ये SRM2 प्लान जो है ना 0001 कंपनी कोड को लिंक हो गया। यदि आपको नया ही एंट्री बनाना है, नया एंट्री भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं मैन्युअली भी। ओके, अपने पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। और दूसरा मतलब कि आपको किसी कॉपी एज करके करना है तो वो भी आप कर सकते हो कि ये दोनों को उठा दिया, उसके बाद मुझे कंपनी कोड एज इट इज रखना है और प्लान खाली चेंज करके देना है। या फिर यदि फिर से वही करूंगा कि मेरा SRM2 प्लान यदि लिंक करने का ट्राई करूंगा ना, तो सिस्टम नहीं करेगी। हेलो, अब देखो जैसे एंटर किया ना, सिस्टम बोलती है SRM2 प्लान जो है ऑलरेडी किसी और कंपनी को 0001 को लिंक है। तो एक प्लान एक टाइम पे एक ही कंपनी कोड को लिंक हो सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। ओके, बट एक कंपनी कोड के जी अंडर में मल्टीपल प्लान्स होते हैं। ओके, तो जस्ट कैंसल दिस वन। यदि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ऐसा, तो मुझे सबसे पहले ये लाइन डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम मुझे अलो करेगी। ओके, सो ये हो गया उनका लिंकेज। अभी जस्ट गोइंग बैक फ्रॉम हियर, मैं कुछ सेव नहीं करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी सेव था। और यहाँ पे असाइन बिजनेस ये कुछ वैल्यूएशन का है, बट इसके अंदर जाके ना कुछ ऐसा एक ट्रिपल ऑप्शन रहता है। देखो यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया को इसको असाइन करना है क्या, प्लान एंड वैल्यूएशन एरिया, बट अपन लोगों ने सारा कॉपी किया है ना, तो ऑल डेटा आ गया हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने प्लान लिया था रेफरेंस में ये वाला, तो इसको कौन सा बिजनेस एरिया असाइन है, 0001। तो यदि मैं इसका भी सर्च करूंगा ना अपना SRM2, उसको भी वही शो करेगा। देखिए आप, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपना टाइम बचता है। और ये बहुत कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं ना, तो ये बेटर है कि रेफरेंस प्लान ही अपन लोग लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी। जब भी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमारे लिए नया प्लान क्रिएट करके दो, तो सबसे पहले अपन लोग उनको पूछते हैं कि हमें एक रेफरेंस प्लान दो। तो रेफरेंस प्लान नहीं दिया तो फिर यही रहता है कि अपने कोई उनका बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वन बाय वन चेक करके उसको अपडेट करना रहता है। बट रेफरेंस प्लान नहीं दिया रहता है ना, तो अपने पास ऑल कॉन्फ़िगरेशन कॉपीज हो जाती है। ओके, सो जस्ट कम बैक फ्रॉम हियर, फिर से अपना अभी प्लान कंपनी कोड को तो लिंक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपना मटेरियल मैनेजमेंट में जाने का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कंपनी कोड को भी लिंक कर सकते हैं, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान को भी लिंक कर सकते हैं, और एक और है असाइन स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो भी प्लान को लिंक कर सकते हैं, बट वो कंपनी कोड को नहीं लिंक होता। ओके, असाइन रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत माइनर यूज होता है और इसका कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं। और ये जो टॉप के थ्री है ना, दो बोल सकते हैं, इनको मैंडेटरी रहता है। ओके, तो लेट्स गो हियर। अभी अभी क्या होता है ना, अभी मान लीजिए मैंने एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कंपनी कोड को असाइन कर दिया, तो वो कंपनी कोड के अंदर में जितने भी प्लान है ना, सिस्टम वो सारे प्लान को परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेने देगी। ओके, बट यदि मैंने ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ना, तो अदर यदि वो प्लान के वो कंपनी कोड के
आप दूसरा कंपनी कोड को लिंक करना चाहेंगे ना, तो अपने को एरर देगा सिस्टम। आप प्लान को तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लिंक कर रहे हो, बट वो प्लान के वो कंपनी कोड, इस प्लान का जो कंपनी कोड है उसको एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके। तो अभी क्या करना रहता है ना, यहाँ पे भी सेम अपना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होगा, अपन लोगों ने क्या डाला था, ये सारे वन ही डाला था, राइट। वन या टू ऐसा वन ही डाला था बस। ओके, तो आप देख सकते हो कि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट है, बट यहाँ पे कौन सा भी कंपनी कोड उसको लिंक नहीं है करंटली। तो अपन क्या करेंगे ना, 0001 ये प्लान को अब कंपनी कोड को डाल देते हैं इसको। ओके, इसको जैसे एंटर करें ना, ये इसके अलावा लेट्स पुट अपना ये भी डालते हैं जो अपन ने क्रिएट किया है, एंटर किया, सेव कर देता हूँ। ओके, सेव करने के बाद अभी ये भी लिंक हो गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, ऊपर की एंट्री जो थी ना, उसको मैं फिर से लॉजिस्टिक में जाके, कंपनी कोड वाले में जाके, अपना प्लान था, टू था टू। ओके, ये लाइन को डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी। क्यों डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज आपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपके बहुत सारे मतलब कि वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड और वो सारे मतलब कि चले जाते हैं सर इधर से। ओके, सो जस्ट पुट इट एंटर। बट ये आगे जाके ना एरर देंगे, तो बेटर है ना सिमरन कि अपन लोग उसी को रहने देते हैं, और यहाँ पे भी उसी हिसाब से कर देते हैं। तो अपना क्या था अभी, SRM वन अपना ये था, और इसको कंपनी कोड दे दिया ये वाला। ओके, तो जस्ट सेव इट। अभी अपना क्या हो गया, सिस्टम को समझ में आएगा कि आपका जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से प्लान के लिए है। ओके, तो लिंकेज भी हो गया। उसके बाद क्या रहता है ना कि प्लान को, कंपनी कोड को तो हो गया, पर प्लान को अभी तक हुआ नहीं, उसके अंदर मल्टीपल प्लान्स रहते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे अपने को अपना परचेसिंग ऑर्ग डालना है। डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भी एंटर नहीं है। ओके, सो सिंपली जस्ट क्लिक, जस्ट गो अगेन ऑन 0001 एंड प्लान ऑल्सो 0001, जस्ट एंटर। अपन लोग यहाँ पे आए, सिलेक्ट करो जस्ट लाइन को, और कॉपी एज कर। ओके, कॉपी एज करने के बाद यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है कि आपका परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालो। तो अपना ऑर्गेनाइजेशन SRM1। ओके, तो जस्ट पुट इट सेव। अभी ये प्लान को तो लिंक हो गया, बट प्लान को नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। अच्छा, तो ये देखिए अभी इसने क्या किया ना, ये दूसरे प्लान को इसने लिंक किया है। तो लेट्स गो इनटू द चेंज मोड। कौन से ना, मैं एक अच्छे से उसको बनाता हूँ। SRM2 अपना था, और उसने क्या किया है ना, 0001 प्लान उठा लिया है। तो उसको मैं अभी पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्यों, बिकॉज मुझे प्लान क्यों दिखाई नहीं दिया, ये पेज इसी साइड में आ रहा था, इसको इधर होना चाहिए था। तो जस्ट डिलीट कर दिस वन। फिर से है ना, पोजीशन में जाके, और अभी यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे अपन, इधर से उठाने के बाद अपना SRM1 था, उसका प्लान भी अपना SRM2 था, राइट। तो अभी सिस्टम को समझ में आएगा कि अपना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्लान को लेंगे। तो जस्ट एंटर करो, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई एंट्री, एंड जस्ट हिट सेव बटन। ऐसा जैसे भी सेव करते हैं, उसके बाद अभी सिस्टम को समझ में आ रहा है कि ये सेम परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से कंपनी कोड को है और कौन से प्लान को है। ओके, तो जस्ट कम हियर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड में क्या होता है, खाली वन स्टेप का रहता है। तो सेम यहाँ पे भी 0001 अपना, लेट्स से ये रेफरेंस प्लान डाल दिया, इसको कॉपी करके, कॉपी का ऑप्शन नहीं रहता है। तो अभी अपन लोग क्या करेंगे ना, अपना प्लान सर्च करते हैं SRM2, उस पर अगर कौन सा कंपनी कोड आया, तो ये स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली आ गई। तो इंस्टेड ऑफ दिस अपन अपना वाला डाल देते हैं इसमें, SRM1, सॉरी। ओके, जस्ट एंटर एंड सेव इट। तो अभी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी अपन ने डिफाइन कर दिया उसको। ओके, जस्ट कम बैक हियर। ये क्या है, एक बार देख लेते हैं। इसमें वही है कि खाली परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपन लोग लिंक कर सकते हैं उसको। तो जस्ट कम बैक। तो अभी अपना
पूरा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है सिमरन। अपन लोगों ने सारे मतलब क्रिएशन भी किए और उनको एक दूसरे को लिंक भी कर दिया है। ओके। तो राइट। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है अभी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग? नहीं, अभी तो नहीं है कुछ, बाकी मैं प्रैक्टिस करूंगी देन आई विल कम टू नो अबाउट। परफेक्ट। सो बोलिए प्लान अपना ये सर, जस्ट रिमेम्बर के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में अपन लोग क्या करेंगे सिमरन? एक सेकंड ना, एक सेकंड। तो अभी अपने पास है ना सिमरन, तो सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा P2P साइकिल। ओके, प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होता है। बट अभी इसके बाद अपन लोग डायरेक्ट इस पे जाने के अलावा है ना, सबसे पहले मास्टर डेटा पे जाएंगे। तो मास्टर डेटा पे जाने का बेनिफिट ये है कि अपने को पता चलेगा कि मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं वेंडर, बिकॉज पीओ क्रिएट के लिए वही सारी चीजें लगती है। राइट, सो जस्ट पुट ओके। इट मास्टर डाटा। So let's go into the document. ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। इसमें ना आपको ये स्टेप भी विथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिए हुए हैं सारे, मैंने क्रिएट किया उसको। ये देखिए सारे वही है कि मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अभी ये फिर से वही असाइनमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये है अभी अपना मास्टर डेटा। सो अभी क्या है ना कि मास्टर डेटा क्या होता है सिमरन, कि मास्टर डेटा इट इज जस्ट अ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस। ओके, कभी भी क्या होता है ना कि कौन से भी बिजनेस प्रोसेस को अपन लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसके लिए मास्टर डेटा लगता है। तो हर एक मॉड्यूल का अलग अलग मास्टर डेटा रहते हैं। जैसे कि एसडी के अलग रहेंगे, एमएम के अलग रहेंगे। तो सेम वे एमएम के मास्टर डेटा में मोस्टली क्या आता है ना, 5 टाइप के मास्टर डेटा आते हैं। ये रहता है मटेरियल मास्टर, कि अपन लोग पूरा मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दूसरा रहता है वेंडर मास्टर, वेंडर का पूरा क्रिएशन करते हैं। उसके बाद रहता है सोर्स लिस्ट, इंफो रिकॉर्ड एंड कोटा अरेंजमेंट। ऐसे टोटल 5 मास्टर डेटा रहते हैं। तो मैं आपको उसका थोड़ा डिफिनेशन वो भी डाल देता हूँ थोड़ा इजी वे में। सो मास्टर डेटा की डेफिनेशन बोला जाता है सिमरन, उसको बोलते हैं इट इज अ बैकबोन, इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस। ओके, तो इस सिंपली यदि आप कहीं पे भी आंसर दे रहे हो, किसी ने पूछा कि मास्टर डेटा क्या रहता है, तो एकदम शॉर्ट वे में आपको आंसर देता है, इट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ
एनी बिजनेस प्रोसेस, कि हर एक बिजनेस प्रोसेस के लिए एक बैकबोन रहता है और अलग अलग बेस्ड ऑन मॉड्यूल ही अप्लाई होता है। तो उसके कितने टाइप्स रहते हैं मास्टर डेटा टाइप्स फॉर एसएपीएमएम? तो उसके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहला रहता है मटेरियल मास्टर, दूसरा है आपका वेंडर मास्टर, तीसरा है आपका टीम फॉर रिकॉर्ड। ये जो रहते हैं ना सिमरन, ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन कोड लेवल को एग्जीक्यूट होते हैं, ये एसपीआरओ में नहीं करने हैं। बट इसका यूज है ना खाली अपने खुद के लिए किया जाता है, ये वेंडर को मतलब है ना कि वेंडर को नहीं सेंड होता है सब कुछ। ओके। तो ओके ओके। चौथा चौथा रहता है इसके अंदर सोर्स लिस्ट, और लास्ट है कोटा अरेंजमेंट। ओके। तो अभी मैं आपको वन बाय वन ऑल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो मास्टर डेटा क्या रहता है, मटेरियल मास्टर क्या रहता है? तो लेट्स गो हियर पुट दिस वन। ओके। सो मटेरियल मास्टर, यदि आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय मटेरियल मास्टर इन एससीपीएम, सो यू नीड टू आंसर it is a database which is mainly used to store the data for different material type। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल टाइप्स रहते हैं, जैसे कि आपने में भी सुना होगा आरओएच रहता है, रॉ मटेरियल, एफईआरटी रहता है, सेमी फिनिश मटेरियल, एचएलपी रहता है, फिनिश मटेरियल, और इस मतलब कि अलग अलग मटेरियल टाइप रहते हैं एसएपी में, यूएनबीडब्ल्यू। सो ये सारे अलग अलग मटेरियल टाइप्स रहते हैं, बट वो सारा डेटा अपन लोग स्टोर करते हैं। ओके। तो इसीलिए उसको बोला जाता है इट इज डेटाबेस विच इज मेनली यूज टू स्टोर द डेटा फॉर डिफरेंट मटेरियल टाइप। ये एक डेटाबेस है कल जिसके अंदर पूरा मटेरियल का इंफॉर्मेशन रहता है। ओके। सो लेट्स पुट द डेफिनेशन। इट इज अ डेटाबेस which is mainly used to store the data for different material टाइप। ओके। सो मटेरियल टाइप क्या रहते हैं ना सिमरन, वो भी अपन लोग देखेंगे। तो नाउ यदि किसी ने पूछा कि उसके टिकवर्ड्स क्या है, तो टिकवर्ड्स क्या रहते हैं, मटेरियल मास्टर, क्रिएशन, चेंज के सारे, वो भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले रहता है MM01। MM01 क्यों रहता है कि अपन लोग उसके अगेंस्ट मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। MM02 रहता है मटेरियल चेंज करने के लिए। MM03 रहता है इसमें मटेरियल जस्ट डिस्प्ले मोड में देखने के लिए। ओके। और उसके बाद कुछ एडिशनल भी टी कोड है, जैसे कि MM60 रहता है, और अ, उसके बाद रहता है MM50 भी रहता है मटेरियल लिस्ट के लिए। एक और रहता है मास ट्रांजेक्शन कोड। क्या रहता है ना सिमरन, ये जस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन कोड है कि इसके अगेंस्ट अपन लोग कभी भी मैसिव वे में मटेरियल मास्टर अपडेट कर सकते हैं। मास बोले या फिर MM17 भी है अपने पास। ये दोनों ट्रांजेक्शन कोड का यूज इसके लिए किया जाता है कि कभी क्या होता है ना कि अपने पास एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 1,000 मटेरियल है, और 1,000 मटेरियल में मुझे आप लोग कुछ चेंजेस करके दो, लेट्स से कि मुझे परचेसिंग ग्रुप चेंज करके दो। तो एक वन बाय वन 1,000 मीटर को आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा। तो अपने पास दो तीन वे होते हैं, जैसे कि आप LSNW LTMC से भी कर सकते हो, बट उसको बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो एसएपी ने मटेरियल मास्टर के लिए एकदम इजी फंक्शनलिटी दे प्रोवाइड करके दिया है कि ये तो ट्रांजेक्शन कोड है मास और MM17, इसका यूज करके अपन लोग मटेरियल मास्टर इजीली अपडेट कर देते हैं। ओके। ओके तो वहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। यदि सपोज लेट से आपको पास ऐसा आया रिक्वायरमेंट कि 1,000 मटेरियल है, बट जो चेंजेस करने हैं ना तो सबको एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सबको डालना है, तो आप उसमें मैन्युअली कर सकते हो। बट यदि ऐसा रिक्वायरमेंट है कि 1,000 मटेरियल है और सारे 1,000 मटेरियल को अलग अलग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, तो इतना फिर से मैन्युअली डालना पड़ेगा आपको कौन सा मटेरियल के लिए कौन सा डालना है। तो वहाँ
भी एक सेकेंडरी ऑप्शन अपने पास दिया है कि अपन लोग एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हैं। बट एक्सेल शीट कैसा होना चाहिए, जिस हिसाब से वो अलो करेगी, जितना आपने को चेंजेस करना है उतना ही डेटा उसमें डालना पड़ता है। ओके, यदि वो दिखा दूंगा चाहे तो मैं आपको, तो ये उसका बेनिफिट्स है। ओके, तो जस्ट रिमेम्बर, इसमें एक मटेरियल लिस्ट का रहता है और एक इसका रहता है। तो लेट मी चेक फॉर MM16 फॉर दैट। ओके, तो ये मटेरियल लिस्ट का है MM16, एंड MM15 किसका है? MM15 ये है स्टेल मटेरियल। ओके, तो कभी कभी क्या आता है ना, मटेरियल एक्सटेंड भी करना रहता है। लेट से एक मटेरियल का अभी करंटली एक ही प्लांट के लिए अवेलेबल है, और फ्यूचर में किसी का रिक्वायरमेंट आया कि ये सेम मटेरियल मुझे दूसरे प्लांट को भी यूज करना है, तो ये ट्रांजेक्शन कोड से भी अपन लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट पुट हियर मटेरियल लिस्ट एक्सटेंड मटेरियल मास्टर। ओके, सो ये सारे उसके ट्रांजेक्शन कोड है। Yes, so ये टू कंप्लीट द मटेरियल्स, ये हो गया इसका। ओके, और सबसे दूसरा चीज सिमरन, टी कोड तो ठीक है, टी कोड एक क्रिएशन का पार्ट है, बट ये सारा डेटा अपन लोग ट्रांजेक्शन कोड के अलावा भी कहीं पे चेक कर सकते हैं। उसको बोला जाता है टेबल लेवल्स। तो टेबल लेवल क्या रहता है ना, ये जितना भी डेटा आप मटेरियल मास्टर का क्रिएट कर रहे हो, तो उस अलग अलग टेबल डाले गए, तो हर एक टेबल के अगेंस्ट उसके चेंजेस रहते हैं। ओके, तो कौन सी फील्ड में कौन सा चेंजेस मेंटेन किया, वो सारे अपन लोग AC16 ट्रांजेक्शन कोड से देख सकते हैं। ओके, तो AC16 में आप एक हर एक टेबल देखने के लिए ट्रांजिशन कोड यूज होता है। इसको आपको तो मतलब कि माइंड में ढाल ही लेना होगा कि ऐसा नहीं कि मटेरियल मास्टर के टेबल, ऐसा नहीं, सब टेबल के लिए AC16 ट्रांजिशन कोड रहता है। ओके, और उसके बाद आपको इस के टेबल, यदि किसी ने पूछे कि के टेबल कितने हैं, तो उसको आंसर देना रहता है आपको, मारा है, मार्सी है, मार्डी है। ओके, और भी दो तीन हैं, सो लेट्स गिव दैट वन नेम एज वेल। MCHB भी है, उसके बाद है अपना EMLGN भी है, EMBEW भी है। ओके, बट मोस्टली आपको ये ऊपर के जो तीन है ना, वो आपको मतलब कि मटेरियल मास्टर का डेटा इसमें रहता है। ये अदर थोड़े से मतलब कि मटेरियल से रिलेटेड ही रहते हैं, और थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं। तो लेट से मारा, मार्सी। सो मारा क्या है, यदि किसी ने आपसे पूछा तो सिंपली क्या करना है, आपको एसीपी में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मैंने जैसा बोला कि हर एक टेबल चेक करने के लिए अपने पास ट्रांजेक्शन कोड AC16 है, जस्ट एंटर करो आप। यहाँ पे अपने को मारा टेबल डालना है खाली। मारा जैसे पे डालोगे ना, अपने को यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। मारा टेबल क्या है, जनरल डेटा फॉर द मटेरियल। मटेरियल मैनेजमेंट का जो जनरल डेटा रहता है ना, कि मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और वो, तो वो सारा इसके इस टेबल के अंदर स्टोर होता है। लेट्स पुट एनी वन एंट्री। मैं अभी एक एंट्री के साथ एग्जीक्यूट करके आपको जो दिखा देता हूँ। लेट्स ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल का कोड तो ये वाला हो गया। ओके, तो उसका क्रिएशन डेट क्या है, उसका क्रिएशन टाइमिंग क्या है, और क्रिएटर किसने क्रिएट किया है, उसका यूजर आईडी यहाँ पे शो होता है। उसके बाद वो मटेरियल के अगेंस्ट किसी ने लास्ट टाइम चेंजेस किए थे क्या, तो वो चेंजेस भी यहाँ पे दिखता है। यदि अभी ये मटेरियल स्टार्टिंग से जब क्रिएट किया ना, उसके बाद चेंजेस ही किए नहीं, इसके वजह से स्टार्टिंग डेट का ही चेंजेस डेट भी दिखा रहा है। ओके, और चेंज कौन करता है उसका भी यहाँ पे आइडिया आ जाता है। तो उसके बाद मेंटेनेंस स्टेटस दिखता है उसका क्या है, और हर एक चीज के लिए मटेरियल देखो, मटेरियल टाइप यहाँ पे ये कस्टम HAW कुछ कस्टम मटेरियल टाइप किसी ने डाला हुआ है। तो सेम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा रहता है उसका, किस में है, नेट वेट कितना, ग्रॉस वेट कितना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है उसका, PC है, मटेरियल ग्रुप L001 है। तो ये सारा डिटेल अपन लोग टेबल लेवल पे देख सकते हैं। ओके, तो जस्ट गो बैक। तो मारा का मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि मारा रहता है जनरल डेटा के लिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट मार्सी, अभी मटेरियल मैनेजमेंट में मार्सी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मार्सी रहता है सिमिलर प्लान स्पेसिफिक। तो इसमें क्या रहता है ना, कि लेट से एक मटेरियल है, दो प्लान के लिए एक्सटेंड, तो इसमें दो लाइन दिखेगी। एक प्लान के लिए जो जो डिटेल है वो सारी इसमें दिखेगी, और दूसरे प्लान के लिए अलग डिटेल दिखेगी। ओके, सो लेट्स पुट हियर एनी प्लान। सो मान लो मैंने 0001 मटेरियल प्लान डाला। ओके, तो ये प्लान अभी करंटली तीन मटेरियल के लिए एक्सटेंड है,
और यहाँ पे क्या है ना कि तीनों मटेरियल के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कोड्स है। तो एक प्लान के लिए एक ही मटेरियल बनाया उन्होंने, बट ऐसा भी रहता है कि एक मटेरियल दो प्लान के लिए रहता है। तो उस सिनारियो में क्या होगा, यहाँ पे एक और लाइन आएगी, और लाइन के अगेंस्ट ये पेपर नाम का जो मटेरियल है दो लाइन को शो करेगा, और उसके अगेंस्ट एक अलग अलग दो प्लान देखेंगे। मटेरियल कोड एक ही रहेगा बट प्लान कोड अलग अलग रहेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, मार्कशीट टेबल में आप लोग प्लान स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं पूरा। प्लान स्पेसिफिक बोले तो इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें थोड़ा सा एसडी का भी डेटा आ जाता है। उसके बाद थोड़ा एमएम का तो पूरा मतलब कि परचेसिंग का डेटा आता है। उसके बाद इधर एमआरपी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करती है अपने को। और अकाउंटिंग की भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल रहता है मटेरियल मास्टर में, मार्कशीट। ओके, सो जस्ट पुट इट हियर। अभी इसमें ही भी मार्डी बोल के रहता है। तो मार्डी क्या रहता है सिमरन, कि अपना स्टोरेज लोकेशन रहता है। तो स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक डिटेल भी अपने को यहाँ पे सिस्टम शो करवाती है। लेट से मेरा प्लांट ही ये वाला और स्टोरेज लोकेशन भी मेरा 0001। तो जस्ट एग्जीक्यूट करो। अभी इसके अगेंस्ट करंटली कुछ भी चेंज सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो अपन लोग रैंडमली एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 835 एंट्रीज है। तो अभी यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन दिख रही है, आप यहाँ पे नोट करो। अभी ये मटेरियल है, ये मटेरियल जो है ना, ये प्लांट और ये स्टोरेज लोकेशन के लिए स्टैंड है। सेम अलग मटेरियल है, वो वही प्लांट और स्टोरेज लोकेशन के कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे अपन लोग है ना, वो स्टोरेज लोकेशन के अगेंस्ट कितने क्वांटिटी मटेरियल अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में 10-10 पीसेस और कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है, सेफ्टी स्टॉक में कुछ नहीं है, तो वो भी डिटेल यहाँ पे देखते रहते हैं स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक। तो मार्केट टेबल क्या रहता है ना, मार्डी, ये स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक टेबल रहता है। ओके, और ये दो तीन है ना, ऐसा कॉमन है सिमरन। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बोल देता है, यदि किसी ने पूछा तो आपको जस्ट उसका नेम पता होना चाहिए क्या है। तो एमसीएचबी में ना कोई मटेरियल बैचेस स्पेसिफिक रहता है, तो उसके बैचेस नंबर भी अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बैचेस नंबर क्या रहता है ना, एक शॉर्टली मैं आपको बोलता हूँ। बैचेस नंबर बोले तो कौन सी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो ना, उसमें बैचेस नंबर के बेस पे एक मतलब कि लेट से एक केमिकल कंपनी और कुछ बॉटल बनाती है, मेडिकल की बॉटल। तो हर एक बॉटल पे अलग अलग बैच नंबर रहता है। तो सिस्टम उसी हिसाब से फाइंड आउट करती है कि पहले तो सिस्टम डिटरमाइन करती है कि मटेरियल कौन से बैच के अगेंस्ट आ रहा है, और वो बैच के इनसाइड भी अलग अलग नंबर रहते हैं, कोड्स। ओके, तो ये बैच के लिए रहता है। अलग दूसरा वाला यदि बोले तो ये रहता है मटेरियल डेटा फॉर द ईच वेयरहाउस। ओके, वेयरहाउस लोकेशन के लिए भी ये मटेरियल एक्सटेंडेड है ना, तो वो भी अपन लोग ये टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में ज्यादा तो ईडब्ल्यू में आ चुका है। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट भी मतलब कि थोड़ा सा डिमांड ही कम हो गया। बट अर्लियर है ना, वेयर हाउस मैनेजमेंट सबसे टफ और इम्पोर्टेंट मॉडल था। ओके। तो द लास्ट वन इज एम बी ई डब्ल्यू। ओके, तो ये मटेरियल का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बोले तो ये मटेरियल के क्या कौन से वैल्यूएशन को लिंक है, उसका वैल्यूएशन टाइप, और उसके मतलब क्या प्राइस मेंटेन किया, वो सारे इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे ये टेबल पे पता कर सकते हैं। ओके, सो मटेरियल मास्टर के की कोड्स और टेबल्स क्लियर है सिमरन? जी क्लियर है। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं ना, अभी एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। जस्ट सेव दिस डॉक्यूमेंट, लेट्स गो बैक। तो जैसे मैंने ट्रांजेक्शन कोड डाले हुए सिमरन, उस हिसाब से इमेज जीरो में आपको जाना होगा सबसे पहले। यहाँ पे हम्म। आने के बाद सबसे पहले कि यहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन करना है कि आप ये जो मटेरियल परचेस कर रहे हो किसके अंदर आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आता है, मैकेनिकल कंपनी के अंदर आता है, केमिकल इंडस्ट्री कौन से पे अंदर आता है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल टाइप्स है सिमरन। तो अपने को यहाँ पे ना आइडेंटिफाई करना है कि अपन को कौन से मटेरियल टाइप के अगेंस्ट ये बनाना है। तो लेट्स डू सम चेंजेस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसके कोड्स नहीं दिखा रहे, उसका डिस्क्रिप्शन दिख रही है। तो लेट मी चेंज सम सेटिंग ऑप्शंस। ये देखो, अभी ये चेंज करने के बाद आप देख रहे हो ना, उसके कोड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये कोड है और ये डिस्क्रिप्शन है। तो जस्ट सिलेक्ट हियर आरओएच,
ROHACP का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जिस उसको सिलेक्ट करो, एंटर करो। मैं आपको एक शॉर्टकट में ना मटेरियल ग्रुप मटेरियल टाइप कैसे बनाते हो दिखा देता हूँ। मटेरियल बनाने से पहले आपको OMS टू ये ट्रांजिशन कोड में जाना है। ओके, ये सेंटर करना है। यहाँ पे आने के बाद सिमरन, अपने पास यहाँ पे क्रिएशन ऑप्शन है, या फिर आप कौन से एग्जिस्टिंग को कॉपी एज करके भी कर सकते हो। बट अभी अपने को कुछ क्रिएट करना नहीं है, या फिर लेट्स से कि मैं एक कस्टम क्रिएट कर देता हूँ कॉपी एज करके। ओके, तो सबसे पहले मुझे वो एंट्री सर्च करना है। यहाँ पे ROH किधर है, ROH सिलेक्ट किया, कॉपी एज पे क्लिक किया, और अभी मेरा नया मटेरियल टाइप का यहाँ पे नाम डालना है मुझे। ओके, चार डेट तक सिस्टम अलाउ करती है मैक्सिमम। सो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन, किसके लिए आप मतलब नाम, या फिर जब आप मटेरियल क्रिएट करते हो तो कौन कौन से व्यू आपको चाहिए, तो वो सारी यहाँ पे फंक्शनलिटी दिए हुए। ओके, और यहाँ पे देखो आप अलग अलग सारी चीजें कि लाइक टू यहाँ पे सिलेक्ट है, तो ये मटेरियल टाइप किया गया है। अपन लोग बाहर से मटेरियल मंगा सकते हैं। यहाँ पे जीरो भी दिया हुआ है, तो अपन लोग इंटरनल भी अपने अपने कंपनी के अंदर भी मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मटेरियल टाइप किया गया है। तो विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर ये सारा इसमें दिया हुआ है। ओके, जस्ट जस्ट एंटर। अभी यहाँ पे आने के बाद है ना सिमरन, मैंने कॉपी किया था ROS से, तो ये ROS से कॉपी करने की वजह से ना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इसका बेनिफिट क्या है ना, ये यदि टिक मार्क किया आपने तो सिस्टम आपको गुड रिसीव करने देता है मटेरियल के अगेंस्ट। यदि ये टिक मार्क किया नहीं ना, तो आपका मटेरियल आप कंपनी में ले ही नहीं सकते हो। ओके, तो यदि मटेरियल आपको अपने वेयर हाउस में रखना है, कंपनी में रखना है, तो ये टिक मार्क आपको एक्टिव रखना पड़ता है। ओके, हम्म। ये हो गया। और दूसरा है वैल्यूएशन अपडेटिंग के लिए। अभी दो ऑप्शन रहते हैं। कभी कभी क्या रहता है ना, मटेरियल अपन मंगाते हैं, बट वो मटेरियल अपन अपने वेयर हाउस में रखते हैं, बट वेंडर को पेमेंट नहीं करते। तो उस सिनारियो में खाली ये वाला भी एक्टिव रहना चल जाएगा। बट यदि अपने को वेंडर को मटेरियल लेने के बाद उसको पेमेंट भी करना है ना, तो उसके लिए ये वाला टिक मार्क भी अपने को एक्टिव होना मांगता है। ओके, तो ये दो टिक मार्क अपने को एक्टिव होने चाहिए, तभी अपन लोग मटेरियल ले सकते और उसका पेमेंट कर सकते। और ये दो पाइपलाइन प्रोसेस के लिए ये दो ब्लैंक ही रहते हैं मोस्टली। तो जस्ट गो बैक फ्रॉम हियर। अभी मैं इसको सेव करूँ कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा यही ट्रांसपोर्ट नंबर का सेव कर लिया। अभी आपको पता तो चल गया ना कि ये मटेरियल टाइप्स कहाँ से आ रहे हैं। जी जी। ओके, तो अभी यदि मैं यहाँ पे देखूंगा ना, तो मे भी अपना वाला भी यहाँ पे दिखेगा मोस्टली। जस्ट गो बैक, एक बार बैक जाके आता हूँ। कौन सा भी एक यहाँ से उठाया, और ये यहाँ पे ये देखो अपना वाला आ गया, ये सारी। ओके, तो जैसे एंटर करना सिमरन यहाँ पे, तो आसन नंबर इज लास्ट नंबर इज अवेलेबल। कौन सा नंबर है, 100 है, तो अपने को एक 100 के ऊपर का 101 नंबर आएगा अभी। ओके, लास्ट जो नंबर क्रिएट हुआ ना वो 100 था। तो सबसे पहले सिमरन, जब मटेरियल क्रिएट करते हैं ना, तो अपने पास ये टाइल आती है एंटर करने के बाद कि आपको मटेरियल कौन कौन से व्यू के लिए स्टेप करने हैं। तो अभी मान लीजिए मटेरियल में नॉर्मल क्रिएट कर दो, तो बेसिक डेटा 1 2 ले रहा हूँ, उसके अंदर परचेसिंग ले रहा हूँ, फिर MRP अभी नहीं लेता। उसके बाद ये यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन 1 2 ले रहा हूँ, और अकाउंटिंग 1 2 ले रहा हूँ। ओके, जस्ट नॉर्मल मटेरियल है कि ये मटेरियल बाहर से हम लोग परचेस कर पाएंगे ऐसा। ओके, कुछ एडिशनली उसमें कॉन्फ़िग नहीं डाला है। तो सबसे पहले जैसे भी एंटर करते हैं ना, सिस्टम अपने को पूछेगा कि आप ये मटेरियल कौन से प्लान के लिए क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज अपन लोगों ने परचेसिंग व्यू उसमें सिलेक्ट किया था। ओके, तो अपना प्लान है SRM 2, मैंने प्लान डाल दिया, और स्टोरेज लोकेशन अपना ROD, स्टोरेज लोकेशन भी डाल दिया। जस्ट एंटर करना। एंटर करने के बाद सबसे पहले बेसिक डेटा पे आएगा। बेसिक डेटा पे सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सिस्टम मैंने दिखाया था ना आपको कि ये नेक्स्ट नंबर 100 है अवेलेबल है, तो सिस्टम ने 100 नंबर दे दिया अपने को। तो जब मटेरियल सेव करेंगे ना, तो उसका नंबर रहेगा 100। ओके, सो लेट्स गिव द डिस्क्रिप्शन। टाटा मोटर फर्स्ट मटेरियल। ओके, तो एक और चीज सिमरन,
अर्लियर क्या होता है ना, ईसीसी में अपने को फंक्शनलिटी दी गई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 18 डिजिट का ही कोड आप डाल सकते थे। बट अभी एस/4HANA में क्या हुआ है ना कि वो एक्सटेंड करके 40 डिजिट का करा गया है। तो अभी जो डिस्क्रिप्शन है ना, आप 40 डिजिट का भी मेंटेन कर सकते हो, और उसके बावजूद भी यदि आपको और भी करना है ना, तो आपके पास यहाँ पे जाके भी है ना, आप वो कर सकते हो। तो मतलब इससे यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है। बट आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आप ये मटेरियल का और भी डीपर आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ओके। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेट्स से ईच मटेरियल ग्रुप, आप यहाँ पे रैंडमली देख सकते हो कि स्टेशनरी रहता है, स्पेयर पार्ट रहता है। तो लेट्स सिलेक्ट द स्पेयर पार्ट राइट ना। यहाँ पे प्लान स्पेसिफिक स्टेटस है, डिवीजन है, साइन वगैरह, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके। जस्ट मैं भी एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मैंने वहाँ पे ऊपर क्लिक किया था, आपको दिखाया था मैंने, राइट, एडिशनल डेटा पे। तो अभी उसने वही पे लेके गए। तो यहाँ पे क्या होता है ना सिमरन, अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है। लेट्स से अभी ये मटेरियल है, ये मटेरियल मैं परचेस कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा वेंडर है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सिस्टम मुझे अलो करेगा मटेरियल परचेस करने के लिए। बट मान लीजिए ये सेम मटेरियल मैं जापान में से परचेस करना चाहता हूँ, और जापान का सप्लायर जापानीज लैंग्वेज में मेंटेन है, और मेरा मटेरियल इंग्लिश लैंग्वेज में मेंटेन है। तो वो सिनारियो में सिस्टम अपने को अलो नहीं करती है पीओ क्रिएशन के लिए, बिकॉज पीओ तो क्रिएट कर देंगे लेट्स से फोर्सफुली, बट वो वेंडर को समझ में नहीं आएगा ना, बिकॉज वो तो जापानीज वेंडर है, उसकी लैंग्वेज जापानीज है। तो इसके लिए सिस्टम अपने को एरर मैसेज देते सीधा कि अपना जो पहले, सबसे पहले आप अपना सप्लायर को जापानीज लैंग्वेज में एक्सटेंड है तो इसको इंग्लिश में करो, या फिर अपना जो वेंडर का कम्युनिकेशन है उसमें, मटेरियल का कम्युनिकेशन, उसमें भी आप एडिशनली एक और लैंग्वेज डालो, इंग्लिश लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, सॉरी। ओके। तो ये तो ओके ओके। ये रहती है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन के लिए। ये रहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मेरा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक मटेरियल को अपन लोग मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए भी डाल सकते हैं। लेट से ये सेम मटेरियल को मैं दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी डालूंगा, ऐसे भी सिस्टम अलाउ करती है। तो पीओ क्रिएट करते हैं ना, तो वो अपने पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहता है कि ये मटेरियल कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। यदि यहाँ पे एक ही है तो सिस्टम एक ही आपको शो करेगी। यदि दो है तो सिस्टम सबसे पहले ये इसको उठाएगी, बट आपके पास वो चेंज करने का ऑप्शन भी सिस्टम देगी कि आपको यदि चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ओके। और एक कन्वर्शन रहता है उसका, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए कितना यूज करना है, वो कन्वर्शन है। एडिशनल डेटा, जैसे मैं आपको बोला ना, यहाँ पे भी वही रहता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यस, गोइंग टू नेक्स्ट। डेटा वो टेक्स्ट का किधर है, बेसिक डेटा टेक्स्ट। ओके। तो मैंने बोला ना मटेरियल का यदि डिस्क्रिप्शन बड़ा है तो यहाँ पे भी अपन लोग और इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ओके। सो जस्ट ओके। गो बैक। अभी बेसिक डेटा वन तो आपका अपना अपडेट हो गया। सो जस्ट पुट इट एंटर, सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरी टाइल में ले जाएगी जहाँ पे भी सब बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। तो जैसे एंटर करो। एंटर करने के बाद परचेसिंग में लेके गए। ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अपना प्लान भी आ रहा है यहाँ पे, इससे पहले प्लान नहीं आ रहा था। तो ये जो व्यू रहती है ना, ये प्लान स्पेसिफिक व्यूज रहती है। तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल दिया अपना, ईच ऑटोमेटिकली बेसिक डेटा से ले लिया। यहाँ पे आपको अपना परचेसिंग ग्रुप डालना होगा। तो आपको याद होगा आप उन लोगों ने ये परचेसिंग ग्रुप बनाया था। ओके। या तो यहाँ पे मॉडल ग्रुप भी बेसिक डेटा वन में से सिस्टम ने उठा लिया। यहाँ पे ना इससे दो तीन ऑप्शन है, ये मैं आपको है ना, जब मैं ऑटोमेटिकली पीओ बनाऊंगा ना तब ये शो करवाऊंगा आपको। तो जैसे बैच मैनेजमेंट, यदि मटेरियल जैसे मैंने आपको बोला, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बैचेस वाइज बनते हैं। तो यदि ये टिक मार अपन लोग एक्टिव नहीं करेंगे ना, तब तक सिस्टम अपने को अलो ही नहीं करेगा कि ये मटेरियल बैच स्पेसिफिक है। तो ये टिक मार सबसे पहले अपने को एक्टिव करना पड़ता है। ओके। ओके। ये अलग अलग परचेसिंग वैल्यूज की रहती है, वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो ये देखिए अलग अलग है। Let's put this one। एंड जैसे भी अपन लोग नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है ना सिंपल जीआर प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है कि ये मटेरियल को आप जब भी ऑर्डर करोगे तो कितने दिन के अंदर अपने को आपको ये मटेरियल चाहिए। तो आप वहाँ पे यहाँ पे डेज डाल सकते हो, टाइम लाइन। तो आपने को वार्निंग डालता है सिस्टम कि भाई आपको ये मटेरियल है ना, कि जैसे भी पीओ बनता है तो आपको 2 ही दिन के अंदर, आपको 2 दिन डाल दिए तो 2 दिन के अंदर आपको गुड रिसीव करना ही पड़ेगा इसका। ओके। तो ये रहता है। उसके बाद यहाँ पे ना सोर्स लिस्ट का भी एक ऑप्शन है। सोर्स लिस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे आगे जाएंगे तब। ओके। सो यहाँ पे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, जस्ट एंटर करो यहाँ पे। जस्ट
वार्निंग मैसेज एंटर करो। अभी प्लान डेटा 1 आया है, तो ये स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक भी हुए दोनों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टोरेज लोकेशन कौन से के लिए एक्सटेंड हो रहा है, तो वो भी आ गया है यहाँ पे। ओके, इसके अंदर अपने पास वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट सारा का सारा आ चुका है। मैंडेटरी बोला जाए तो स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक भी बैच मैनेजमेंट रहता है ना, तो ये रहता है। और लैब फॉर्म्स ये हो गए मैंडेटरी, कुछ है क्या पे सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन सिमिलर। तो अपने को ज्यादा ही स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक मटेरियल यूज करते हैं ना, उस टाइम में ही इंफॉर्मेशन डाली जाती है। लेबल टाइप क्या रहता है ना कि स्टोरेज लोकेशन में बारकोड चिपकाया जाता है मटेरियल्स को। तो वो गन से स्कैन करते हैं, तो वो बारकोड जनरेट यदि करने हैं ना अपने को, तो यहाँ पे लेबल टाइप्स में से पर्टिकुलर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जीआर लेबल डेट से, जैसे भी मेरा ये सिलेक्ट किया ना, जब मेरा जीआर लूंगा तो ये एक लेबल क्रिएट हो जाएगा मेरा वाला। और वो लेबल प्रिंटिंग मशीन में जाके उसको अपन लोग मटेरियल के ऊपर चिपका सकते हैं। तो अपन लोग बाद में कभी भी जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो मटेरियल का, जस्ट ये मटेरियल क्या है, वो बारकोड की वजह से। क्योंकि क्या रहता है ना कि लेट से एक रैक है स्टोरेज लोकेशन में, और एक रैक के अंदर बहुत सारे नट डाले गए हैं, तो बट नट का साइज अलग अलग रहती है। तो अपन लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये नट की डायमेंशन क्या है। तो यदि उसके ऊपर ये बारकोड चिपका रहता है ना, तो अपन लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नट बोल्ट कौन सा है। वो बारकोड के ऊपर मटेरियल नंबर रहता है, सिंपली वो मटेरियल नंबर आप एसीपी में डालो तो पूरा डिटेल आ जाएगा। और अदरवाइज बारकोड के ऊपर नहीं, सिर्फ खाली बारकोड ही नहीं रहता है, उसका मटेरियल कोड, उसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है, कौन से प्लान के लिए, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन रहती है ऑलमोस्ट उसके ऊपर, जो अपने को चाहिए हो। ओके, ओके तो ओके। ये हो गए। यहाँ पे भी जस्ट ऑप्शनल है सारे। जस्ट यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इशू, इशू के लिए मतलब क्या, कि लेट्स से कि मेरे कंपनी में मटेरियल पड़ा हुआ है और अभी मुझे कंपनी वाले किसी बंदे को मटेरियल लेना है, तो लेने के टाइम में कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अगेंस्ट इशू होगा, तो वो भी अपन लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लेट्स से कि आपने कोई केमिकल ऑर्डर किया बाहर से, वो केमिकल का बॉक्स आपने किलो में ऑर्डर कर लिया। ओके, लेट्स से मैंने 10 किलो का कुछ ऑयल ऑर्डर कर लिया, तो आपने लीटर में नहीं किया उसका ऑर्डर, ऑर्डर आपने किलो में कर लिया। बट आपने कंपनी में आने के बाद क्या है ना कि डिपार्टमेंट वाले को खाली 1 ही लीटर चाहिए उसमें से। तो अभी आपने तो केजी में किया है, केजी का लीटर में कन्वर्ट करने का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इशूइंग यूनिट लीटर डाल देते हैं। तो जब लीटर में इशू करेगा ना, तो सिस्टम को अलो कर देती है कि इसने 1 लीटर लेके गया था इसमें से। और स्टैंडर्ड आपको तो पता है कि केजी का लीटर में कन्वर्सेशन किसका होता है, तो वो रूल अप्लाई हो जाता है उसमें। ओके। ओके, जस्ट एंटर। ये भी जस्ट ग्रॉस वेट, उसका वेट और वही देना है, कि बिकॉज अपने को स्टोरेज लोकेशन में रखना पड़ता है ना। तो रखने के लिए सिस्टम को मतलब कि वो अपने योग्य है कि अपने मटेरियल ड्रेस से अपना रैक का साइज कम है, मटेरियल बड़ा है, तो यहाँ पे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। तो फिर वो वेयर हाउस पर्सन आइडेंटिफाई करता है कि मेरे पास इतना इतना स्पेस बचा है, उसके अंदर ये मटेरियल बिठेगा कि नहीं बिठेगा। ओके, जस्ट एंटर। फिर अकाउंटिंग व्यू में से यहाँ पे अपने को वैल्यूएशन क्लास डालनी पड़ती है। तो वैल्यूएशन क्लास क्या रहते हैं ना, तो हर एक इसके लिए अलग अलग वैल्यूएशन क्लास दिए गए। लेट्स से ये आरओएच है, आरओएच के लिए 3,000 दी गई है। वैसे ही एफआरटी के लिए, मतलब हर एक मटेरियल टाइप के अलग अलग वैल्यूएशन क्लास रहते हैं। वैल्यूएशन क्लास यही रहता है कि इसी के बेस पे अपन है ना कि लाइक जीएल अकाउंट सिस्टम को ट्रिगर करता है। वैल्यूएशन क्लास जो मटेरियल ग्रुप को लिंक रहता है, और उसकी ये बेस पे ही अपन लोग सिस्टम को समझ में आता है कि कौन सा जीएल अकाउंट के आगे से पेमेंट करना है। ओके, तो उसके बाद ये यहाँ पे सिंपल दो ऑप्शन रहते हैं, कि यस और एक यम वी। यस बोले तो क्या रहता है स्टैंडर्ड, वी बोले तो रहता है मूविंग। मूविंग बोले तो क्या कि यदि इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो एसीपी का एक स्टैंडर्ड प्राइस मैंने डाल दिया कि लेट से 100 रुपीज। जब भी मैं प्रयोग क्रिएट करूंगा ना, सबसे पहले सिस्टम मुझे ये 100 प्राइस वापस शो करवाएगी, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्राइस है। बट यदि प्राइस चेंज होती रहती है, अपन लोग लेट से कोई एक पेन है, वो पेन अर्लियर में 10 रुपए की मिल रही है और अभी 15 रुपए की हो गई है, तो ये लोग अपन यहाँ पे ना फी मेंटेन करते हैं, और उसका प्राइस है ना मूविंग एवरेज डाल देते हैं, लेट से 10 रुपीज और 100 रुपीज, वो चेंज होता रहता है। ओके, जस्ट एंटर करिए इस पे। अकाउंटिंग टू भी में बस वही टैक्स कोड वगैरह वही है, फाइनेंस वाले देते हैं सारी इंफॉर्मेशन अपने को। जस्ट एंटर करना है इसमें भी। और अभी पूरे व्यूज हो चुके हैं, तो जस्ट सेव कर दो। सेव करने के बाद आपने देखा कि अपना मटेरियल कोड 100 सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है सिमरन। हम्म। ओके, तो इस वे से
अपन मटेरियल क्रिएट करते हैं। सो ये हो गया मटेरियल। अभी अपन जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, वो है वेंडर मास्टर। ओके, तो सिमरन आज के लिए इतना प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट है कि जाओ मैं आगे, क्योंकि वो आपके माइंड के ऊपर से चला जाएगा, मुझे तो लग रहा है। ये भी आई ऑलरेडी गेस। मुझे लगता है कि मटेरियल मैनेजमेंट का नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज वो पहले ही वो बहुत बड़ा था, ये ऊपर वाला। ये करोगे तो नीचे का भूल जाओगे, तो बेटर है कि आप थोड़ा प्रिपरेशन करो। फिर उसके बाद है ना, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो कल ये इतने चारों टॉपिक के ऊपर टारगेट करेंगे। ओके ओके। ओके, सो जस्ट मैं ये मतलब मार्क कर देता हूँ कि अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। One to one, and after that we created the model master as मटेरियल well, right? मास्टर। हम्म। Okay, so today we are going with the vendor master. हम्म। So, do you know what is mean by vendor master? In which the all the data of vendor is present, all the details, address, name, etc. Correct, correct, correct. Okay. If we wrote the definition here, so definition is it is a database in which it is a database which is responsible to store all the information related to vendor. Okay, so same as you told, like if the definition, if you can say, the definition is it is the database which is responsible to store all the information related to vendor details. Okay, Yeah, if right. we can say T codes. So the T codes is for the vendor master. So right now we are using in S/4HANA system. So we have only one transaction code is a BP. Yeah, in this, like, we are creating all the stuff like vendor creation, customer creations. So all part will be done inside only one transaction code. But earlier we are using the ERP like ECC systems. So in that system we have the multiple transaction codes. Okay, so right now let's put ECC first. S for HANA, sorry, S for HANA. BP is equal to business partner. Okay, and the ECC we are using multiple transaction codes. Let's say SK01 create, SK02 change, SK03 to display. So ECC system, we are using this multiple transaction codes. Also, this is just for the like both combination, company code and the purchasing organization combination. But if you have the requirement, if someone saying please create me the supplier, only the company code level. I don't want into the purchasing organization level. So that scenario also we have two more transaction codes are there. Like see, one is there FK01 is for a company code specific, and another is there MK01 is for the purchasing organization specific. Okay, so same way, change purpose also we have the different transaction code FK02 and MK02. Display also the same.
Okay, so difference is clear, right? ECC system, we are using this transaction codes to create the vendor SK01. In SK01, we have option to create with the vendor like company code level as well as the purchasing organization level. But if we are using the FK01 transaction code, in that scenario, system only allow us to create the vendor only on the company code level, not for the purchasing org level. So in that scenario, we are not able to purchase the material from the supplier. Okay, and if we are using the MKG run, in that scenario, system allows to create the supplier on the purchasing organization level, but that supplier is not maintained on company code. So, like if you want both in one, so that time we are going with the SK01 transition code. Okay, but nowadays we are using the S4HANA system. In that we are using only the BP transition code. In BP transition code, we are doing this all activities. Okay, and if we can say tables for the ECC and this for HANA, so just here. So table first for the ECC, let's key. So we have multiple table. LFA1 is there, LFM1 is there, LFC1 also there. Okay, so LF A1 is for the basic data, vendor basic data. We can able to see in this table basic details. This is a company code specific detail. Let me show you into the system itself. Let's go SS16N. Here, I'll app A1 the first transition table. So you can see this mean is general section in which we are able to see all the general information like vendor name along with their address, all those things. Let's give here the one entry only. If I'm executing with one entry, so you can able to see I'm able to say see in this table like vendor code along with their country, their name, city, posting codes, address. So this all information we can able to see in the LFA1 table. Okay, so next is the LFM1. So LFM1 is for the company code specific. Let's put here. So you can see this is for the vendor master record for the purchasing org data. So in this table, we can able to see the if vendor is extended or the multiple purchasing organization. So we can able to see the multiple lines here. If vendor is extended for one single purchasing organization, then we can able to see only one line here. So let's put here again execute. So you can see we are able to see the supplier code along with their purchasing organization, and next is their basic information. Purchasing organization level, whatever information we maintain like currency, purchasing group, payment terms. So those all detail we can able to see in this table. Okay, so let's put here this thing. And the third one is a LFC1. So just go back from here. You can see in this we are able to see like if supplier is linked with the another system, so that one also like company code or something. So see if I put here only one entry, so I can able to see supplier along with their company code with fiscal year, all debit credit informations. Okay, so see this all previously entries done again the supplier, how many they sell, how many they credit. So this we can able to see in this table. Okay, and now if you can see S4HANA tables as well, these tables also we are able to see the details in S4HANA, but some parameter we cannot able to see. So just go again. We have BUT 000 triple zero. Okay, so these are the general section in S4HANA. You can see here
we can able to see the general details. We have when you are creating the supplier in BP transaction code, one number will be generated, but that number is for the business partner number. Along with that, you can able to find one more number like vendor number you need to find in the business partner itself. Okay, so BUT is the table for the S/4HANA business partner. Okay, same way. So now let me show you into the SAP now itself how we can create in the business partner. So just go into a transition called BP. Here you have option personal, organization, and groups. Okay, you want to create the business partner as a personal, so you can choose with this one. You want to create a business partner with the organization. Organization means is the one company, and that company against we are purchasing the material. So this one comes under the organization. Multiple companies group, so this one comes here. So basically, we are using these two only. Okay, so let's go with the organization or person. So once I click on personal, then you can able to see here we have the different groupings. Okay, grouping itself like number range or that one we can say. Okay, so based on that system will be triggering the number ranges. So right now we can keep this one as it is, and here we have the group. So when you are creating newly, so this one is appearing first. This one only asking you the general vendor details like the vendor name and those details. So let's put here Tata Motors. Okay, just basic information I given here. Language options still not appearing. Okay, just put it enter. So languages come below, not it. Okay. Anyway, so basic whatever information is required that will be given like the vendor name and those details. So after that, just hit on the save button. Okay. Once you hit save button, then what happen? We have one number will be generated. That number called as business partner number. But this is the business partner number. In that against we are not able to purchase. We require the vendor number. Then only we can able to purchase. So how we can find our vendor number? So first of all, let me put this one. Okay. So now you can say right now this is in display mode. Okay. Again, we need to go into the top business partner here. You need to click on the change mode. Then again, it will be visible to the change. Then just again click on drop down. Then we have the multiple options. So now just you can see the first level 666 against it was showing the maintain. Okay. So same way we need to find here the purchasing organization level. So just scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. Where is the supplier? Yep, this is called. Okay, ASLVN. I this is for the customer. Okay, so see here, someone changing the names format anyway. But these are the 01. Someone changed the name format, but anyway. So click on this one, FLVN 01. Okay.
and take this name as well. FLVN01. Okay, this is for the purchasing organization level. So you can see once we selected this one, then this style will be coming here. Earlier it was not showing. Okay, so that means now we are extending our supplier into the purchasing organization level. So just click here. After that, you need to give first your purchasing organization. So you remember what is our purchasing organization? Let me check into the top. It was SMR1. Okay, so this on our purchasing organization, just put it here and just enter. Okay, after that, system will be asking you the currency. So which currency you want? So let's put currency euros. Okay, after that, you have the multiple options. You need to give the payment terms. When you are doing this one creation in real life, you have need to maintain many parameters. Okay, but right now we are just using the test mode, so required information only we can give. So shipping condition, like when you are transferring the material from one plant to the another plant, that time it was required. Okay, GR based invoice verification. This is the most important. Like if we are tick this one, then only system allow us to make the good receipt. Then only you can able to make the invoice. Okay, so this will be one of the option. Then again, if you pull down purchasing group, also you have option. So let me check what is our purchasing group. So is MR is our purchasing group. So just give the purchasing group also here. After that, we have again scroll down option. Okay, so if you want to create the automatically PO, that scenario, you need to active this tick mark also. Okay, so right now we are just creating normal PO, so ignore it. Purchasing block, if you active this tick mark, then system not allow us to create the purchase order again this supplier if you active this tick mark. Okay, if you just want to active the tick mark on the purchasing organization level only, right now you can see we open SRM one. So if you just want to block this only one single purchasing organization, and you have another purchasing organization, like two or three purchasing organization is there with this supplier. So that scenario, which purchasing organization, again the second option, purchasing block or level indicator is active, then system not allow us to create the purchase order. Again, this specific purchase organization, and other against it was allowed. Okay, that is one of the option. Confirmation control key, that one option also there. Return supplier, when we want to transfer the our material return into the supplier, that time this tick mark also required to the active. Otherwise, system not allow us to create the return order. Okay, so then next, planning calendar, just for the like days and those things it will be showing. Scroll down. Okay, so these are the mandatory option we require. So just go into the next level. So all we given, so just click on the check option. Okay, so what system saying? First, edit the standard address with the error. So which kind of error? The posting code it was asking. We need to take the return block every time we are doing this. Which one? Just you did it now. No, vendor master creation only one time activity, right? Once we created the vendor, then after in future that we just need to use the supplier code only. Got it? No, it is a bit confusing in the return field. Return field one. Okay, okay. So return field, why we are activating? We have the return purchase order kind of documents also there in our scenario. In that scenario, what happened? We are purchasing some product from the supplier. After some date, we realize we don't want to use this product. So that scenario, what we are doing? We are returning the material to the supplier. Okay. So that time we need to create one return order. Return order means it's the purchase order itself only, but the category we define as a return order. Okay, in that we have option to
put the supplier. So which supplier against we want to return the, so that time we need to give the supplier detail also in the top into the purchase order, right? So if we are not activating this step here in the vendor master, then that scenario system not allow us to transfer the material to the supplier. That is the meaning only. Okay, got it. Okay, so just save it. So now it was maintained on the organization level as well. So just go again, and here you need to find, let's put here double triple zero also there, but why it was showing EX in there? Let's go here. Okay, this is for the company code level. So just click here again. Let me put this one also so that we can remember. Okay, this is for the company. So let's go now. So now here first you need to give our company code here. So what is our company code? SRM one or something, one I guess it. So One, just yeah. give the company code, enter. So you can see this company code along with our supplier number we can able to find here. Okay. So now here you just need to give the GL account details. So this is a test system, so we don't know which one is the correct. So but just select any random GL account from the list. So we have the payment financial, bill exchange. Okay, let's put this one as 5,000. Just enter. So what happened whenever we are using this supplier? So that time system can identify which jail account system need to be triggered. Okay, how is it possible? Based on this configuration only, we maintain again this supplier against we given the company code, and that company code against we link only one jail account. We have option to link, and that one we link as this one. Okay, and then next is the general informations only. You can whatever based on our requirement we can give these informations. Just scroll down, you can able to see all like withholding tax if it is like allowable. So we need to give this one as well. Remaining all just here payment and normal informations only. Just scroll down. Okay, so this all are the optional informations. Pricing procedure, if we want to do any dunning procedure, so we have option to give here the number. These all are the optionals. All company code against we want to extend, then we need to select this one. Okay, so these are all only the required information we need to give. Just click on the check option again. Okay, what it was saying, first it is So what standard is the dining procedure in the previous tab? driving procedure. I Where it read is? dining procedure something. Yeah, the dining procedure is not actually not dining. Let me go there. I guess it was here. Okay, so it is. Let's click on the drop down. We During, can able to see here the procedures like pricing procedure kind of numbers it is only. So which kind of payment we require in that scenario. So we if we select this one, then that payment procedure which one we link that one system triggering. Okay. So okay. these are the like payment term based on only pricing procedure based on. So just go again on the general details. Here it was system showing something is missing. So just scroll down. Scroll down. Language option I still not able to see. Let's put any sector. Okay, so enter the fielding company code postal. Okay, so go here.
First, edit standard address with the error. So here something is missing. Posting code was asking here. Certificate for the company for posting address. Yeah, this one. Okay, so basically here we given all this detail. These all are the sufficient, but system asking the posting code, company postal code. So postal code this one we given, PO box address. This one. Here also we given the posting code. So where it was required. Where is this option? The field of posting code, short description, company postal code. Large customer has been customizing required field. There is has no empty field. Here enter value of the company postal. Where it is. Here it was showing only, but where that one standard address with the error, we given the title. Let's put here Mr. One or something. So that we given the short description, VIP address comment. This one is done. We given the area, location Pune, posting code also we given. India. Posting code here also below we given. So where it was missing, extension fax code, user email, telephone, say this kind of the options. Somewhere like system saying we need to give again the posting code, but it was not allowing.
Where is that company code posting code actually? Okay, maybe something is missing again with that particular supplier. So just go again into company or just cancel this one. Let's create a supplier only. Okay, I am again going into supplier PP. Just create a new one. Just give here the same name, Tata Motors. Given the language and those informations. Currency also is condition 13. Okay, so the general detail is okay, then just save it. Then one more number will be generated. Let's keep this number also. 22 instead of this, we just keep 22. Again, go here, select, first click on the change option, and then go into the again affiliate 000. Just click on company, put company code. Let's give here 0001 now. Maybe some configuration is missing up in that company code. So just give here the detail, supply detail, remaining kept as it is. Just click on check. Any mandatory thing. Okay, so it was saying it was the standard address. It's targeting on the India only. So INEC for India. Just check option. So you remember earlier we are not able to see this field. We can only able to see these two fields. So now it was showing here. So just copy this one, paste here. Okay, and now just click on check option. So company code level also it was now good. So just click on the save option. Okay, and same way again go to the change mode. Now supply is extended of company code level. Same way we need to extend on the purchasing organization level as well. So just click on that. Just go here. Here this role is for the purchasing organization specific. So just go into purchasing organization tile. Give purchasing organization number as a 0001. Okay, and here you can put the currency. So this is our currency. Remaining part, just click on check button. That one is done, and just hit on save option. Okay, so our supplier also extended on the organization level. Just now just go into this tile,
vendor general details. Here you can able to see vendor number is this one. So in that scenario, what happen? What is our business partner number? Same number is for our vendor number also. Okay. So just copy this one. We have two scenarios, Simran. If earlier you are using the ECC system and now business partner you are creating the S/4HANA system, then that scenario two numbers will be generated. One number showing different for the vendor business partner number based on the number range it will coming, and another is for the vendor master number also. So that is also showing the difference, but both linking here. So here we have this style is here in vendor master, vendor general detail, in which we can able to see our vendor number. So in currently both are the same. Okay, so just go back from here. Now we created our vendor as well. Okay, so in our process here we created the vendor material. So the next is info record. Okay, so in master data we have done two part, material master, vendor master. Now we are going with the info record. So still in this both you have any doubt? No. Okay, so let's go with the third one. These are the just basic information we are maintaining. This information help we to create our purchase order and those informations. Okay, so what is meant by info record, Simran? So info record it is just part of the master data which is responsible to maintain vendor and the material relationship. That means in this we are maintaining all material and related information only. Okay, so let's put the definition first. So it is also it is part of master data. It is responsible to maintain vendor and material relationship. Okay, so the T codes is there for info record. So EME 11 is for the create. EME 12 is for the change. EME 13 is for the display. Okay, these are the table. So T code and the table is the table is INA. Next is INE, and two more are there. Similar F018, F0 or F418, I guess, or F019. So let me show you what is meant by INA, INE with tables. So just go again in SAP, go into SAP System, put the table INE, first INA. So INA means info record for the general details. Okay. INA means info record for purchasing organization details. Okay, and same way F018 and F019 also there. So that means, okay, so it is just material info record means A018. And if you want to see the contact header, so A019 also there. So let's go on A018 only. What is meant by A018? Okay, so A018 only. This is not AO.
Material specific. So just go here again. F017, it is not 19. Okay. So what is mean by 17? So 17 is the material plant specific. Okay. So these are the defined. So let's go here. A017 is for the plant specific and A018 is for the material specific. Okay, so these are the tables. So let's go into a transaction code. So still it is clear, right, Simran, what is meant by info record? So info record is just part of the master data only. It is responsible to maintain the vendor and the material relationship. Okay, both combination we need to maintain here. So the creation T code is a ME11, change is ME12, display is ME13, and same way the table level information is stored into the ENA level. We can able to see the general informations like only the material and those information only. So let's show you into the what which kind of information is there in ENA. So just come here, just put it here random one entry and just execute it. So you can see we can able to see your info record number along with the material supplier. Okay, and just normal basic information like which kind of unit of measurement we given, but still we are not able to see here any purchasing organization or any plan number, right? So how we can achieve this one? So we need to follow the another number table. If you use INA, so INA again also you can see we just able to see here info record along with their purchasing organization number. Okay, and the purchasing organization level, which kind of information we maintain, that one we can able to see, let's say purchasing group, currency, and those information. Same way, other tables also working. Okay, so now just go into the creation, how we can create. So ME11, we need to go here. We need to give here our supplier number and the material information, Simran. So you remember, we just created one supplier. That supplier number is this one 92, correct? This one we just created. So just give this number here. And now let me find any number with one link with the 0001 plant. So Mars is a table. There we can able to see our material number. So how many numbers are there? Three numbers are there. So just execute it and just take one of the number from here. So let's take here the pen we previously created, right? So just put here and here. So just note Simran. Okay. So in interview, one question will be common. Interview will be asking how many types of info record we are using. So the answer is we are using four types are there in info record. One is the standard, another is the subcontracting, pipeline, and the consignment. This all for SAP given. Okay. So just put this one also. Types of info record. So basically four types are there. So one is a standard. Standard means normal purchase order. Second is a consignment. Third one is a pipeline. And fourth one is their subcontracting. Okay, so these are the four types are there in info record. So let's go with the normal. So if Simran, like it is not mandatory, you need to give this all information. Okay, whenever you are creating the info record, if you just given these two informations like material and the supplier and just putting enter, then that scenario what happen? Okay, so system saying so this pen is not maintained for the 0001. Okay, so let's go here. SSSTN. Okay, so it was asking the plan number, I guess. So just put here the plan 0001.
Then what is the material not maintained for purchasing organization? Material against we are not given any purchasing organization. Just use another method. It is go back from here. So see Simran. So if you are just given the information like supplier and the material name, then that scenario what happen? System allow us to create the info record, but that info record is not extended on the purchasing organization level. Okay, it is just a normal info record. Okay, right now you can see I given material along with the vendor like purchasing organization and plan code as well. So that means I am extend this specific info material combination info record only for this combination. If in my purchase order, if I am not given this combination, then system not allows my parameters. System showing only the normal information. So right now I am given this all information and selecting the standard one and just clicking on enter. Okay, so now this is just a basic detail information Simran, in which we have option to maintain the reminder one to the days format, and here the conversion like 1 ml is equal to how many ml, so that one conversion I can maintain here, and this is just basic details. So now just click on enter, or else you can click on organization data one. So once I click here, you can able to see here my purchasing organization number along with my plan code. Okay, and now here system asking we to put the standard quantity. So let's give the 10 quantity as a standard quantity. Here GR based invoice verification is active we need to do. And now here how many amount I need to give. So whenever I am ordering one piece I want to give 1 ml, I need to give the 100 euros. Okay, so this conversation is maintained. So what is the advantage for the info record? Whenever we are creating the purchase order, that time if I given this vendor along with this material combination and this purchasing organization and plan combination, so that time system automatically taking price from the info record. And the another condition type will be triggered. So that time we no need to put the price manually. If you want to change the price, you can change it. But system suggesting you this price you given into the info record. Okay, so just click enter. Purchasing group it was asking, so just put it here 100 or something. So you can see these two conditions are there, Simran. If we are maintaining the info record, that time system triggering the PBOO condition type. Okay, if we are not maintaining the info record inside the price, then that time system triggering this PBXS condition type, and we need to maintain the price manually. Okay, but now I want info record price automatically, so I am clicking on the first option. Okay, and just enter and just again enter and save it. So now you can see Simran, my info record number is successfully generated. Okay. Okay, so info record just part of information only. It is not any transaction which one we are sending to the supplier or anything. This is just for our internal purpose in which we are maintaining some prices conditions for the supplier only. Okay, so Okay, and this has to be done on our side, not on. only we need to do only. We Okay, means users, not consultant. Okay, okay. so done. Then the next topic is the source list. Okay, so source is also the same, only the information, only the difference is there. Let's go down. Okay, so what is meant by source list? So source list also Simran, it is also a source of the information. Only difference in the source list, we do not
maintain any kind of prices conditions. You remember in info record we given price, right? 100 rupees. But in source list, Mm. source is also the same use only. We are maintaining some combination vendor and material, but in which we are not given any prices conditions. So the definition is it is also a source of information only difference only different in source lists. We do not maintain any kind of price condition. Okay, so let's go. So the importance of the source, if anyone asking you, so you need to answer them. Importance of source list is, so we have the several importance are there, Simran, in sources. Okay, so the first importance like display the source of supply. We have option to maintain the source of supply code also. Okay, if we given this one, then system automatically suggesting the supplier code whenever we are getting the purchase order. Okay, the second thing, display block source of supply. So let me first let me write here, and then I will show you into the system as well. Okay, so the first one is a display source of supply. The second one is display block source of supply. Third one is display fixed vendor name. And the last one is display time frame for ordering material from supply from a vendor or supplier. Okay, so let me go into the system so that you can able to see this information. So first of all, before going into the system, let me put transition codes also. So the T codes easier for the source list is the first T code is image01 to create the source list. Same image02 to change the source list, and image03 to display the source list. Okay, so the T code is a simple only here, and the tables are there. Only one table is there for the source list, EORD. EORD. Okay, and also if someone asking you how we can create the source list, so we need to answer we can create the source list with the two ways. Either we can create manually, or else we have option to create the source list automatically also. Okay, so the types, let's put here the types as well. The first type is manually, and the second is the automatically. Okay, so now let's go into the system now finally. So the T code I given image01, right? So once I given the T code here first thing I need to give the material code, Simran, and along with the plant code. Okay, so my material is a raw material and the plant is a 0001. I am just putting enter. Once I putting enter, the system asking me the time frame. So from which date to which date I want to validate this this source list. So let's say I given the today's date as a starting date. So where is today's date? So I given this one, and ending date, let's put here 30/01.
1999. Okay. So this one is my ending then, valid ending, or else you just go here. You have option to select here any date. So between this date only, this info record will be the valid. This source list will be the valid. Okay. So see, I given starting date this one, ending date this one, and along with I have option to give the supplier. So this is the optional option shift run. Okay. If you given the supplier, then system have plus point. So just take the supplier also. So what is our supplier? So our supplier is the ending with 22, right? So just scroll up. Where is our supplier code? This one is our supplier code. So just put the supplier code here. Then here we have options, Imran, to put the purchasing organization. Let's put the purchasing or these all are the optional option only. It's not mandatory to give, but if we are given, then system will be able to find easily. Just put again planned also 0001. So planning plan is not created, so that's why it was not appearing here. So just ignore it. Now here, if already any document is created, let's say any purchase order is created with this vendor and this combination Simran, so that time here the number will be appearing here. Okay, number along with their item number. And then we have option here, as I wrote the first line I write here, the importance, display the source of supply. So if we given here the supplier code, then system automatically suggesting which supplier we need to purchase again this supplier material. Okay, this is the first advantage. And the second, just minimize this one. Okay, and the second advantage, we have option for the block indicator, fixed indicator, and time frame. Okay, these three. So let's go again into the SAP. You can see I have here option the time frame, right? From which date to which date I want to validate this source list. So that one is there. Second, we have option to fix the supplier. If I active this one tick mark, Simran, so whenever I am purchasing material, that time system only suggesting this supplier. Okay, if I selected this one, if I am creating the purchase order, so that time system saying you given the fixed indicator, so that's why you need to purchase only against this supplier for this material. Okay, or else we have second option, block indicator. If I given here the block indicator, whenever I am creating the purchase order with this combination like supplier and the vendor, system not allowing me to create the purchase order. Got it? दोनों का Yes, डिफरेंस got it. समझ में आया? एकदम इजी है. Mhm. देखो ये फिक्स इंडिकेटर यदि लगाया ना, तो फिक्स इंडिकेटर लगाया है और अपन लोगों ने पीओ क्रिएट किया विद दिस बोथ कॉम्बिनेशन, मटेरियल ये वाला डाला और वेंडर ये वाला डाला, तो सिस्टम अपने को इसी के साथ कंटिन्यू करने देगा. बट यदि इन केस मैंने मटेरियल ये वाला यूज कर रहा हूँ और सप्लायर में अलग डाल रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे अलो ही नहीं करने देगा पीओ क्रिएट करने को. सिस्टम बोलेगा कि आपने सोर्स लिस्ट में आपने फिक्स इंडिकेटर एक्टिव किया है. यदि आपको दूसरे वेंडर के साथ पीओ बनाना है, तो आपको पहले वो उधर से डीएक्टिवेट करो, तभी जाके अपने को एक्टिव करना मतलब अलो करेगा. ओके. सेकंड थिंग, द ब्लॉकिंग इंडिकेटर. यदि हम ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ पीओ बना रहे हैं, तो सिस्टम अपने को पीओ बनाने नहीं देगा, क्योंकि अपन लोगों ने यहाँ पे ब्लॉकिंग इंडिकेटर एक्टिव करके रखा है. ओके. यदि अपने को बनाना है, तो इसको फिर से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. Hmm. Okay, clear? Good. And now the third option here, MRP indicator. So sometime what happens, Imran, we have the requirement, we don't want to create the PO manually every time, right? So that scenario, what we are using, we have the MRP procedure. So with the help of MRP, we are automatically creating our the purchase requisitions. And on behalf of purchase requisition, we are creating the POs. So that scenario, this one use. If I put here the blank, so that means system saying it is not related to the MRP. So every time I need to create PO manually. Okay, and some organization using the MRP procedure. So if I given here, so record relevant to the MRP, it will coming. And the second thing, if I want to create automatically schedule line means you just purchase requisition only. Okay, if I want to create the schedule line, so that scenario I need to do the second one. Clear, Simran?
एमआरपी से भी हम लोग परचेसिंग रिक्विजिशन हो या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में शेड्यूलिंग लाइंस रहते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं सिस्टम, कि हम लोगों ने मतलब कुछ पैरामीटर मेंटेन करने पड़ते हैं मटेरियल मास्टर में, और कुछ कोटा अरेंजमेंट में और या फिर इधर, तो उसके बाद सिस्टम क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग लाइन जनरेट करके देता है। ओके, ये थोड़ा सा पीपी का भी कॉम्बिनेशन है इसमें, पीपी मॉड्यूल जो रहता है ना, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, उसका भी इसमें थोड़ा सा यूज रहता है। ओके, सो राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ब्लैंक एंड जस्ट क्लिकिंग सेव ऑप्शन। ओके, सो अभी हमारा इंफो सोर्स लिस्ट भी क्रिएट हो गया है। तो अब तक कुछ डाउट है क्या, मतलब ये मैनुअली सोर्स लिस्ट क्रिएट किया। ओके, पहले मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। यदि और एक ऑप्शन मैंने लिखा था कि ऑटोमेटिकली सोर्स लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सोर्स लिस्ट के लिए क्या रहता है ना, अपने पास मटेरियल मास्टर में MM03 में गया, लेट से मेरा मटेरियल था रॉ मटेरियल, राइट। सो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट गया, यहाँ पे लेट्स सिलेक्ट ऑल द टाइल्स, जस्ट पुट अपना प्लान था 0001 001 कंपनी नहीं आ रहा है प्लान, ये क्या करता है पता नहीं, सेम नंबर है। ओके, यानी FI के व्यूज उसके एक्टिव नहीं होंगे, मे बी ऐसा कुछ होगा। सो जो वो अपने को व्यू चाहिए उतने व्यू सिलेक्ट करते हैं। सो जस्ट सिलेक्ट द परचेसिंग टाइल, जैसे एंटर, मटेरियल लेजर को एक्टिव करने को बोल रहा है सिस्टम। सो ये अपन लोग को इसमें कोई ऑप्शन है क्या, जस्ट गो इनटू द एसएस एस्टिमेट। ये एक स्टैंडर्ड प्लांट है ना, उसमें मुझे छेड़छाड़ी करनी नहीं, नहीं तो एक काम करते हैं, अपन ने कल एक मटेरियल क्रिएट किया था, वही मटेरियल को लेते हैं, अपना मटेरियल कोड किया था, जस्ट पुल अप, ये मटेरियल मैंने बनाया था एक 100 नंबर वाला। सो जस्ट यू गेट मटेरियल, परचेसिंग व्यू में गए, था ये सारे एम्प्टी। ओके, सो यहाँ पे सिमरन अपने पास एक ऑप्शन रहता है स्ट्रीम लिस्ट डाउन आने के बाद, ये सोर्स लिस्ट वाला। ओके, यदि अपने को ऑटोमेटिकली सोर्स लिस्ट चाहिए तो इसको अपने को एक्टिव करना पड़ता है। ओके, और मे बी सेम वे वेंडर मास्टर में भी अपने देखा था, लेट्स गो इनटू वेंडर मास्टर आल्सो। सो व्हाट इज आवर वेंडर नंबर, सो वेंडर नंबर इज एंडिंग विद 22, just put it, go inside, click on purchasing organization tile and just scroll down। इसमें सोर्स लिस्ट का कुछ ऑप्शन है कि देखिएगा एक बार। सो सप्लायर सर्विस लेवल है, इसे रिटर्न का था, पीओ प्लगइन का है, लग रहा था इसमें है ऐसा करके, बट एक ही रहता है। सर्विस, जब हम लोग सर्विस करते हैं ना उस टाइम में इसको एक्टिव करना पड़ता है। ओके, तो इसमें नहीं है सोर्स लिस्ट का ऑप्शन, खाली अपना इसमें रहता है कि वेंडर मास्टर, सॉरी मटेरियल मास्टर में अपने को बस उसको एक्टिव कर देना है सोर्स लिस्ट वाला। ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है ना, सजेस्ट करता है कि आपने सोर्स लिस्ट एक्टिव किया है तो आपको M11 में से ही आपको मतलब कि सप्लायर को उठाना पड़ेगा। ओके, ओके, सो ये था उन दोनों का मीनिंग। तो सोर्स लिस्ट तक क्लियर है, राइट। सो जस्ट पुट इट टू द लास्ट टॉपिक, कोटा अरेंजमेंट आल्सो। तो इसमें क्या होगा ना कि पूरा मास्टर डेटा कवर हो जाएगा। कोटा अरेंजमेंट, कैन वी डू दिस टाइप टुमारो? ये छोटा सा एक कोटा अरेंजमेंट। ओके, ओके,
बड़ा रहता है तो मैं आपको बोलता कि नहीं पहले इसको प्रैक्टिस करो, बट इसका मीनिंग क्या है ना, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी जाएगा। ओके, सो कोटा अरेंजमेंट क्या होता है ना सिमरन, वेयर द मटेरियल नीड टू बी परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ सप्लाई, कोटा अरेंजमेंट विल बी यूज। मतलब क्या, कि हम लोग लेट्स से कि मुझे पेन खरीदना है मार्केट में से, बट मेरे पास चार दुकान है, उसमें से जो मुझे सस्ते में देगा मैं उसके पास से लूंगा, राइट। मैं यदि कोई सब मुझे पता है कि ये बंदा महंगा बेचता है, उसके बाद भी मैं उसके पास से नहीं लूंगा, तो इस सिनारियो में एसएपी ने क्या फंक्शनलिटी दिया अपने पास, कोटा अरेंजमेंट। तो जब भी हम लोग कोई मटेरियल पहली बार परचेस करें मार्केट में से, उस टाइम में हम लोग एक कोटेशन क्रिएट करते हैं, और वो कोटेशन है ना मल्टीपल सप्लायर को सेंड कर देते हैं। फिर सप्लायर क्या करता है ना, उसके पास जाएगा मटेरियल, फिर सप्लायर उसके अगेंस्ट उसका प्राइस डाल देता है कि उसको कितना रुपए में ये पेज भेजेगा और कौन सी डेट तक वो भेजेगा। ओके, अपने पास एक डेडलाइन डेट दिया रहता है कि वो डेट अपन लोग उनको प्रोवाइड करते हैं कि मुझे मटेरियल इस डेट से पहले पहले चाहिए। तो सप्लायर उसको एक्टिव करके बोलेगा कि हाँ ये मटेरियल मेरे पास है, और मैं यदि उसके पास कम भी है, लेट से 50% ही है, तो वो उसके पास वो भी ऑप्शन है वहाँ पे कि मेरे पास इतना है मैं इतना बेच सकता हूँ। ओके, फिर उसका कोटेशन अपने पास आता है, फिर अपन लोग क्या करते हैं ना, उसमें से जो अपने को रीजनेबल जो क्वालिटी वाला मटेरियल लगता है, वो उसका कोटेशन अपन लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो जस्ट पुट द डेफिनेशन, इसको ओके। पूरा डिप में जाएंगे अपन। दिस पार्ट ऑफ then a material need to purchase from different source of supply, that time quota arrangement will be used। ओके, सो ये उसका डेफिनेशन है कोटा अरेंजमेंट का, और यदि उसका टी कोड किसी ने पूछा तो टी कोड है उसके ये MQ1, इसमें अपन लोग कोटा क्रिएट करते हैं। ओके, और टेबल यदि पूछे तो उसका टेबल है EQ UK एंड AQ UP, ये दो टेबल है उसके। ओके, और एक और फॉर्मूला है, यदि वो लॉर्डली पूछा नहीं जाता बट यदि पूछा गया तो अपने पास उसका आंसर रहना चाहिए। कोटा रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोटा रेटिंग कैलकुलेट होता है कोटा अलोकेटेड कोटा अलोकेटेड क्वांटिटी प्लस कोटा बेस क्वांटिटी डिवाइड बाय कोटा। Let's put bracket complete, bracket complete, just putting enter, divide by कोटा। ओके, ये समझने को इजी जाएगा, इसको जिसमें मैंने 20 में लाइन डाल दी। ओके, तो कोटा का यदि किसी ने पूछा कि कोटा रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो अपने पास उसको आंसर देना रहेगा कि जो कोटा का अलोकेटेड क्वांटिटी है ना, कि कितना क्वांटिटी अपन ने सप्लायर को अलोकेट किया, और कोटा बेस क्वांटिटी बोले तो टोटल क्वांटिटी, एंड डिवाइड बाय कोटा कितना परसेंट दिया है। तो यदि ये कैलकुलेट किया तो उससे बेस पे अपन लोग कोटा का रेटिंग कैलकुलेट करता है सिस्टम। ओके, एसीपी का स्टैंडर्ड है ये अपने को करने की जरूरत नहीं, सिस्टम इस हिसाब से बिहेव करता है। ओके। ओके, सो इसको बोलते हैं कोटा अरेंजमेंट। सो स्टिल नाउ कुछ डाउट है सिमरन? नो। नहीं ना? ओके, सो कल जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो ये तो जस्ट प्रोक्योरमेंट साइकिल है, इसका नहीं, अपन लोग स्टार्ट करेंगे P2P साइकिल से। ओके, P2P साइकिल भी सिमिलर रहता ओके। है, इधर लिखे नहीं ना P2P साइकिल,
तो यहाँ पे मैं एक और नाम डाल देता हूँ, P2P साइकिल बोलते हैं। P2P साइकिल का नाम मतलब रहता है प्रोक्योर टू साइकिल बोलते हैं, P2P साइकिल। ओके, इसको बोलते हैं P2P साइकिल। इसको अपन लोग कर लेंगे। तो इसके नेम से रो में डाल दूंगा, उसका डेट है। ओके, सो सिमरन अब तक तो पूरा क्लियर है ना? अब तक कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बट आई विल गो थ्रू इट अगेन, देन आई विल सी। प्रैक्टिस कीजिए उसका, जितने भी क्रिएट करे ना, रिकॉर्डिंग का यूज करो। अभी मैंने आदित्य से भी बात किया था रिसेंटली, आदित्य भी बोली कि आपको रिकॉर्डिंग के एक्सेस मिल गए हैं। तो ऐसे एसएपी की भी एक्सेस मिल चुके हैं आपको, राइट? जैसे हम जैसे मुझे दिया गया था उसे। तो बिल्कुल। उन दोनों का यूज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर समझने में इजी जाता है। और कुछ हम्म। डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जी। फिर कैसा चल रहा है? आपने जो कल टॉपिक किया उस पे किया प्रैक्टिस? हाँ, मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन ऑन हैंड्स मैंने अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कर लिया है। तो पहले मैंने सारा नए से बनाया था, तो मुझे कॉपी नहीं किया। तो फिर सेकंड टाइम मैंने सब कॉपी करके बनाया, कंपनी कोड एंड ऑल। हाँ हाँ। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है ना बना तो? नहीं, नहीं, नहीं। सो हम एक्चुअली लोगों ने योगेश, कैन यू प्रोवाइड मी दीज नोट्स दैट यू आर राइटिंग? तो थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए भी। मैंने ये सेम नोट बोला था, बट मैं क्या करता हूँ ना, इसको इधर सेम आदित्य को डाल देता हूँ, फिर आदित्य आपको ओके। बाईपास कर देगी उसको। ठीक ये है, ठीक है। ये जो नोट का बेनिफिट क्या है ना, बेसिकली ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है, ये टीम्स पे जाना चाहिए था यहाँ पे सीधा। तो आप डेली जो अपडेटेड है वो आप वहाँ से पिकअप कर सकते थे, बट अभी एक एक्सेल शीट है, उसमें अपडेट करना पड़ेगा कि लाइक क्या चेंजेस है। तो मैं देखता हूँ उसको आज का सेक्शन होने के बाद कि कैसा है वो फॉर्मेट। फिर वो एक्सेल शीट में उनको मुझे उनको सेंड करना पड़ेगा, फिर वो आपको सेंड करेंगे। ओके। ओके, सो ठीक है। अपन लोग आए थे कल कोटा, रेटिंग कोटा अरेंजमेंट तक आए थे, right? कोटा अरेंजमेंट क्या है उसका हो गया। तो अभी जाते हैं वन बाय वन। P2P से। पहले P2P का है ना, पहले आपको स्टेप बोल देता हूँ। P2P लिख देता हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप इज पीआर क्रिएशन। पीआर बोले तो परचेस रिक्विजिशन। ओके, ट्रांजेक्शन कोड भी उसके आगे लिख देता हूँ मैं, MA51 या पीआर होने के बाद है ना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सेकंड वन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RFQ। ये क्रिएट होता है, ट्रांजेक्शन कोड है उसका MA59 ऐसा कुछ तो है, डालता हूँ उसको। फिर उसके बाद थर्ड कोटेशन, फिर फोर्थ है प्राइस कंपैरिजन। प्राइस कंपैरिजन होने के बाद देखो, सिंपल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ सिमरन में। हम लोग पहले पीआर बनाते हैं। पीआर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें कि पूरा मटेरियल का रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कौन सा मटेरियल परचेस करना है, कितना प्राइस अपने को देना है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं।
ओके। पीआर बनने के बाद एक आरएफक्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन नाम में। कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट बना रहे हैं, किसको कोटेशन किसको सेंड करते हैं अपन लोग, वेंडर को। तो एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, वो जाएगा वेंडर को। तो वेंडर क्या करेंगे ना, उसका कोटेशन बेचेगा उधर से। लेट से मैंने 5 पीसेस, मुझे कुछ भी ऑर्डर करना है, तो मैंने 5 अलग अलग बंदों को भेजा, तो वो बंदे उधर से उनका कोटेशन बेचेंगे इस ट्रांजेक्शन कोड के इनसाइड में। ओके। जैसे भी उनका कोटेशन होता है, फिर उनका प्राइस कंपेयर किया जाता है। वो कौन करता है, अपन लोग कंपेयर करते हैं, जिसको परचेस करना है वो। फिर कंपेयर होने के बाद अपने को पता चलता है कि कौन अपने को कम रेट में दे रहा है, तो अपन उससे मटेरियल लेते हैं। तो लेने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद अपन लोग क्या करते हैं ना, पीओ क्रिएट करते हैं सिंपली। ओके। और द पीओ होने के बाद अपना सेकंड लास्ट स्टेप है उसका जीआर लेना, कि मटेरियल लेके आ जाएगा सप्लायर अपने पास, तो उस टाइम में गुड रिसीव करना पड़ता है। गुड रिसिप्ट लेते हैं। गुड रिसिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में जी आर सॉरी। और गुड रिसिप्ट के बाद एक सेकंड ना, गुड रिसिप्ट के बाद अपन लोग उसका गुड इशू भी कर सकते हैं सिमिलर। जैसे कि मटेरियल आ गया अपने हाथ में, तो वो जिसको चाहिए कंपनी में उसको दे भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड इशू। ओके। GI। ओके। और द लास्ट स्टेप इसका अभी, वेंडर का मटेरियल अपने पास आ गया, तो अभी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट से पहले अपने को गुड इनवॉइस बनाना पड़ता है। ओके। इसको बोलते हैं, जीआई भी बोल सकते हैं, जीआई दोनों को बोलते हैं गुड इशू। तो गुड इनवॉइस भी करना पड़ता है इसके बाद। ओके। और इसका ट्रांजेक्शन कोड है MRPO, इन दोनों का मेगो। इस पर आना में मेगो में हो जाता है सब कुछ। इसी से में इसके लिए भी मतलब अलग ट्रांजेक्शन कोड भी यूज कर सकते थे, बट इस पर आना में ये सब कुछ इसी में हो रहा है, मेगो में। ओके। सो सिमिलर, 1 मिनट दीजिए ना मुझे, एक डॉक्यूमेंट है मैं सबको क्या आता हूँ इसमें ना, थोड़ा डीपर नहीं है, 1 सेकंड। ओके। ओके। सो अभी आप देखोगे ना सिमरन, इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ओके। ये क्या रहता है, परफॉर्मेंस साइकिल रहता है, ये नॉलेज के लिए कि परफॉर्मेंस साइकिल कैसे चलता है कंपनी में। तो वो इस हिसाब से चलता है कि सबसे पहले अपने को इंफॉर्मेशन गेथरिंग करना पड़ता है, राइट? करेक्ट। यस। ओके। पूरा इंफॉर्मेशन आने के बाद अपन लोग क्या करते हैं ना, डिटरमाइन द सोर्स की वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर सिलेक्ट होने के बाद अपन लोग पीओ बनाते हैं। ओके। पीओ बनने के बाद जस्ट पीओ मॉनिटर करते हैं कि मटेरियल कहाँ तक आया। फिर उसके बाद मटेरियल जैसे भी अपने पास आता है, तो अपन लोग गुड रिसीव कर लेते हैं और मटेरियल अपने स्टोर में या वेयर हाउस में रख लेते हैं। फिर उसके बाद उसको इनवॉइस बनाना पड़ता है, और वो इनवॉइस के बिहाफ ऑफ पेमेंट हो जाता है। ओके। और यहाँ पे एसएपी में वो कैसा चलता है वो दिखा रहे हैं अभी। तो एसएपी में सबसे पहले ना
पीआर बनता है। पीआर कौन से ट्रांजेक्शन कोड में बनता है? EMI 59 में। ओके, पीआर बनने के बाद अपने को एक इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गया कि मुझे कौन सा मटेरियल परचेस करना है मार्केट में से और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब ऐसा। तो उसके बाद एक RFQ बना जाता है। RFQ को बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ये जस्ट रिक्वेस्ट रहती है जब भी हम लोग पहली बार मटेरियल परचेस करते हैं ना, तब बनाते हैं, और यही रिक्वेस्ट सप्लायर्स को सेंड होती है। फिर उसके बेस पे सप्लायर क्या करता है ना, उनके कोटेशन डाल देता है अपने को। ओके, फिर उनके कोटेशन डालने के बाद वो अपने को रिसेंट हो जाता है। फिर अपन लोग क्या करते हैं ना, उसको कंपेयर करते हैं, वो प्राइजेस को। प्राइस कंपेयर करने के बाद फिक्स हो गया कि कौन सा वेंडर से लेना है। तो फिर उसके बाद अपने पास मटेरियल का तो डिटेल था ही पहले से, और वेंडर भी फिक्स हो गया, तो फिर सिंपली परचेस ऑर्डर बना लेते हैं ये में 21 से। और परचेस ऑर्डर बनने के बाद गुड रिसिप्ट बना दे। गुड रिसिप्ट होने के बाद मटेरियल अपने पास आ गया। फिर उसके बाद MRK कर दो, इनवॉइस बन जाएगा उसका, और इनवॉइस के बेस पे फाइनेंस वाले उसको पेमेंट कर देते हैं। ओके, तो इसके ट्रांजेक्शन कोड ये RFQ के EMI 41 क्रिएट। ओके, और कोटेशन का है EMI 47 एंड प्राइस कंपैरिजन करते हैं अपन लोग EMI 49 में। ओके, और अभी ये 1 बाय 1 सिनारियो लेते हैं इन सबको। तो सबसे पहला है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो आपको पता है PR क्या रहता है, परचेस रिक्वेस्ट क्या रहता है? जी, या जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट आती है पीछे प्लांट में या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो फिर PR रेज करते हैं सारी बराबर डिटेल्स डाल के। बराबर, जैसे भी अपने पास रिक्वायरमेंट आती है ना, सबसे पहले हम PR के पास जाते हैं मटेरियल परचेस करने से पहले। ओके, तो PR को बोला जाता है, यदि उसका डेफिनेशन बोले ना, तो PR का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। ओके, लेट्स पुट अ डेफिनेशन। So it is an internal document which will be created in order to purchase the material। ये क्या रहता है? जैसे एक इंटरनल डॉक्यूमेंट रहता है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू परचेज द मटेरियल। ओके, सो it is an internal document which will be created to purchase the material। ओके, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये खाली क्यों बनाते हैं अपन लोग? मटेरियल परचेस करने के लिए। सो अभी इसके भी मतलब कि ट्रांजेक्शन कोड बोले जाए तो टी कोड इसके तो सबसे पहला टी कोड इसका EMI 51 ये क्या करता है? PR क्रिएट करता है। सेम यहाँ पे भी सीक्वेंस है, EMI 52 क्या करता है? PR चेंज करता है। और EMI 53 क्या करता है? PR को डिस्प्ले करता है। और एडिशनल में आते हैं यहाँ पे EMI एक रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए भी है। लेट्स कंफर्म EMI 29 फॉर PO एंड EMI 54 आई गेस 54 और 59। EMI 54 इनकी जिसका है डिस्प्ले परचेज एक्विजिशन है, इसमें भी EMI 59 ऑटोमेटिकली क्रिएशन परचेज एक्विजिशन, नहीं सॉरी ये परचेज ऑर्डर का था। एक और है, इसको बोला जाता है कि या रिलीज के लिए लाइक ME 54N यूज करते हैं ना, जिनको अप्रूवल के लिए देना हो। हाँ ऐसे ही, बट EMI 51 से क्यों नहीं आया? मैंने 54N 54 ही ट्राई किया था, 54 से नहीं आया था वो। बट पता नहीं या इसमें ऊपर सब्जेक्ट लाइन रहती है, बट मे भी हो सकता है यहाँ पे अप्रूवल का टैब आ जाता है यदि स्ट्रैटेजी रहता है तो। बट ये कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि वही है क्या। ओके। वही है। तो बात क्या है ना, खाली यहाँ पे जो रिलीज स्ट्रैटेजी डिफाइन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टाइल आ जाती है रिलीज स्ट्रैटेजी नाम की, और उसमें वो लेवल्स शो करते हैं। ओके, टिकोड यही है EMI 54N। सो
पीआर रिलीज के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, सो ये हो गए इसके ट्रांजेक्शन कोड। और इसका यदि लिस्ट भी चेक करना है तो लिस्ट के लिए ट्रांजेक्शन कोड है EME है। ये ट्रांजेक्शन कोड का यूज करके अपन लोग पीआर की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, वो टेबल लेवल से भी वो दिखता है। और इनके यदि टेबल्स की बात किया जाए तो इसमें लॉर्डली दो टेबल यूज होते हैं। एक होता है ईबान एंड दूसरा होता है EBAN। ओके, सो मोस्टली ईबान का यूज होता है। ईबान में आप देख सकते हो कि जैसे SS16 में गए, ईबान डाला यहाँ पे। ईबान का मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन खाली, तो इसमें पूरा परचेज रिक्विजिशन की इंफॉर्मेशन आ जाती है, A to Z फील्ड। और दूसरा रहता है EBAN। तो इसमें क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन के अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन शो करती है कि कौन सा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी इसमें यूज किया गया है। क्योंकि उसी के बेस पे PO बनता है और PO को समझ में आता है कि कौन सा GL अकाउंट को ट्रिगर करना है बाद में। ओके। सो ये हो गया उसके दोनों की कमेंट है। अभी अपन लोग जाते हैं आगे। तो पीआर तो कुछ डाउट है, मतलब कि नॉर्मल क्या रहता है पीआर और उसका क्यों किया किया जाता है। तो अभी मतलब ट्रांजेक्शन कोड से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो या तो क्लियर है ना। जी जी, क्लियर है। सो जस्ट कॉपी द ट्रांजेक्शन कोड, ACP में जाते हैं। सबसे पहले अपने को कभी भी कुछ ऑर्डर करना है तो अपने पास दो इंफॉर्मेशन अपने पास लगती है। एक रहता है वेंडर, दूसरा रहता है मटेरियल, राइट। तो मटेरियल लेट से अपने पास है वेंडर कि वो 22 वाला अपन ने यूज किया था, और एक मटेरियल पे अपने को चाहिए। मटेरियल एक लिया था अपन ने, उसका नाम था उसका, चेक ऑटोमेटिकली आता है क्या। नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली, सो जस्ट गो इनसाइड SSS में जाके मार्कशीट टेबल लेके मैं 1000 कंपनी कोड का 0001 कंपनी कोड का यूज कर रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस थे अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट, तो बेटर रहते कि ये ACP स्टैंडर्ड का रहता है तो अपने एरर कम हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ या से एक मटेरियल उठा लेना खाली रॉ मटेरियल से। और अभी इसको मैं मेरे अपने डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ। Let's say material is this one and vendor is, अभी अपना वेंडर को देखना पड़ेगा। अपना वेंडर को 32 बोल के था शायद एंडिंग में। ओके, सो अपने पास दोनों इंफॉर्मेशन है अभी। प्लान तो अपने को पता है कौन सा है। सो जस्ट पुट मटेरियल एंड वेंडर। और अभी आते हैं अपन लोग एसएपी में। तो एसएपी में जैसे भी अपन लोग एमई 51EN का यूज करते हैं तो क्रिएशन में थे। तो यहाँ पे आने के बाद सुनना, इस टाइप का लेआउट नजर आता है। सो इस सबसे पहले ये इसको बोला जाता है हेडर लेआउट। इसमें अभी कुछ भी टेक्स्ट अपन लोग मेंटेन कर सकते हैं कि PO के साथ कुछ मैन्युअली लिख के भी वेंडर को भेजना है क्या, तो वो भी अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि रिलीज स्ट्रैटेजी डिफाइन परचेज रिक्विजिशन के लिए, तो यहाँ पे एक और टाइल यहाँ पे याद हो जाएगी और उसका नाम रहेगा रिलीज स्ट्रैटेजी। और उसमें सारे अप्रूवल के लेवल शो करेंगे। बट यहाँ से अप्रूव नहीं कर सकते, अप्रूव करने के लिए अपने को ME54N में आना पड़ता है। ओके, और उसको ये दो टाइल इसके हो गए। यहाँ पे सोर्स डिटर्मिनेशन उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रहते हैं ना कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप्स रहते हैं। सो ENB है, ENBS है, PR है। सो ACP ने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया है ENB। ओके, तो इसका यूज अपन लोग करेंगे। मैं आपको ये भी शो कराऊंगा कि डॉक्यूमेंट टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे भी बिलो आए ना, तो अपने को यहाँ पे यदि कुछ पर्टिकुलर लाइन को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीशन का ऑप्शन सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स से अभी ये जो पहला ऑप्शन है ये स्टेटस शो करवाता है कि ये लाइन यदि डिलीटेड है तो यहाँ पे डिलीट का सिंबल आ जाएगा। यदि ओके है तो कुछ मतलब ब्लैंक रहता है।
ओके, यदि लाइन में कुछ डिलीशन इंडिकेटर वगैरह एक्टिव नहीं है तो ब्लैंक रहता है। दूसरा रहता है आइटम नंबर। आइटम नंबर क्या रहता है ना, कि एक परचेस रिक्विजिशन के अगेंस्ट अपन लोग 10 मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसमें सीक्वेंस दिखता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ओके, और इसको बोलता है, ये बोले तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी क्या रहता है ना, कि एक फाइनेंस से अपने को दिया हुआ रहता है। तो ये जब भी पीआर बनाएंगे तो पीआर का ऑन बिहाफ ऑफ यदि पीओ बनाने को जाएंगे ना, तो ये सेम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी पीओ में भी आएगा। और उसी अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के अगर जीएल अकाउंट और सब कुछ लिंक रहते हैं। तो इससे सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि कौन से अकाउंट के अगर चार्जेस पे करने हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, आइटम कैटेगरी। तो आइटम कैटेगरी में अपन लोग वेरियस टाइप के आइटम कैटेगरी डिफाइन किया है। यदि ब्लैंक रखा तो एसीपी का स्टैंडर्ड पीओ है। यदि के डाल दिया तो कंसाइनमेंट का पीओ है। यदि एल डाल दिया तो, एक सेकंड, मोबाइल पे कॉल आ रहा है, एक सेकंड। सो यहाँ पे क्या रहता है ना सिमरन, कि अलग अलग आइटम कैटेगरीज रहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यदि के डाल दिया, तो के का मतलब रहता है कि सिस्टम आइडेंटिफाई करेगी कि ये कंसाइनमेंट का परचेस रिक्विजिशन है। तो यल डाला तो यल का मतलब रहता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का परचेज रिक्विजिशन है। यस डाला तो यस बोले तो थर्ड पार्टी का परचेज रिक्विजिशन है। यू का स्टॉक ट्रांसफर सर्विस का रहता है तो डी, इनहाउस लिमिट का ई, स्टॉक प्रोविजन बाय द कस्टमर उसका रहता है सी, रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का रहता है पी। तो अलग अलग एसएपी के अलग अलग नेम मतलब कि आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो उसके बेस पे सिस्टम को समझ में आता है कि ये परचेज रिक्विजिशन कौन सी कैटेगरी का है। ओके, तो लेट्स से राइट नाउ अपन स्टैंडर्ड में करते हैं। ब्लैंक रहा तो इसका मतलब रहता है स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सिमरन? जी सर, क्लियर है। ओके, फिर सिंपली अभी अपने को क्या करना है, अपना मटेरियल उठाना है यहाँ से। और अभी नेक्स्ट स्टाइल है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन डालो। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद क्या होगा ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका सॉरी डिकोड डालो, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका डिस्क्रिप्शन पिकअप कर ले। ओके, फिर अपने को कितनी क्वांटिटी चाहिए, लेट से मुझे 10 पीसेस चाहिए, तो मैंने 10 पीसेस डाल दिए। मैं उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ब्लैंक रखूंगा क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सब कुछ उठाएगा। फिर अभी ये रहता है डिलीवरी डेट, कि आपको कौन सी डेट को ये मटेरियल चाहिए। सो जस्ट गिव टुडेज डेट एज अ डिलीवरी डेट। तो आज का 22 है, 22 डाल दिया। मटेरियल ग्रुप, मटेरियल मास्टर से सिस्टम उठा लेगा। अभी यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को प्लांट। तो मटेरियल ग्रुप उठाने के लिए सिस्टम को तो पता है कि ये मटेरियल का अगेंस्ट कौन सा मटेरियल ग्रुप मेंटेन है, बट हर एक प्लांट के अलग 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 भी मेंटेन कर सकते हैं, तो बेटर कि प्लांट भी डाल दो। ओके, तो सिस्टम को अभी समझ में आएगा कि ये मटेरियल कौन से प्लांट के लिए डाल रहे हैं। आप यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन भी डाल सकते हैं अपना वाला। और उसके बाद परचेज ग्रुप भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो जस्ट पुट एंटर। और अपन लोग क्या करते हैं, वेंडर भी डाल देते हैं। वेंडर जैसे ऑप्शनल है, आप देख सकते हो, आप मैंडेटरी नहीं है। ओके, और यदि मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे क्या है ना, कि फिक्स वेंडर रहता है। फिक्स वेंडर बोले तो क्या, ये लाइन आइटम मुझे यही वेंडर के अगेंस्ट क्रिएट करने देगा, दूसरा वेंडर सिस्टम अलो नहीं करेगा। तो बेटर है कि अपन लोग यहाँ पे डालते हैं, इस पे अलो करता है सिस्टम। तो जस्ट कॉपी द वेंडर को एज वेल, जस्ट पेस्ट इट हियर एंड नाउ मैं खाली एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसमें स्टोरेज लोकेशन प्लान पूरा दिया। सो अगेन पुटिंग, मैंने प्लान डाला तो सिस्टम बोल रहा है प्लीज एंटर द प्लांट। क्यों नहीं लगा इसको, 0001 किधर है अपना, इसमें तो है ही नहीं, किधर गया प्लान, 00 गया किधर। ओके, लो अपना वाला फिर ट्राई करते हैं, उसके अगेंस्ट से मटेरियल नहीं है मगर अपना प्लान तो है यहाँ पे, बट 0001 भी होना चाहिए था क्योंकि उसी के अगेंस्ट अपन ने मटेरियल निकाले। कैंसिल दिस वन, क्यों ये सब ये कर रहे हैं, पता नहीं। इससे 16 प्लान डाला मैं 0001, उसके अगेंस्ट मेरे मटेरियल थे 3 मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे तो क्लियरली प्लान दिख रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है फिर। 0001 पर टॉप पे आना चाहिए था इसको। तो चाहिए था ये भी। सो
अभी क्या कर रहा है ना, सिस्टम सिस्टम वो प्लान ही नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, तो अपने को अलग वे से जाना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ये प्लांट सिस्टम में अवेलेबल है और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे मतलब सिस्टम का ब्लीच है ये। बट अपने को टेस्ट केस रन करना है, सो बेटर कि कुछ वेंडर। किसी ने सिस्टम को छेड़छाड़ी किया होगा मैं भी। वो बोले क्या करते हैं ना, अपना मटेरियल यूज करके अपना प्लान के अगेंस्ट कौन सा तो तो अभी इसको निकाल के मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो अपना प्लान के अगेंस्ट था, जो अपन लोगों ने क्रिएट किया था, वो डाल दे रहा हूँ। ओके, तो अपना प्लान डालते ही सिमरन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन ले लिया। यदि यहाँ पे आपको कुछ डालना है, शो लोकेशन ऑलरेडी मैंने डाला, तो उसको भी उठा लिया। सिस्टम क्या बोला है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी मैंडेटरी है इसमें, तो अपने को यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी लेना ही पड़ेगा। और यदि उसको लिया तो आगे ही दिक्कत आती है, बट लेट्स पुट इट। सो कॉस्ट सेंटर का है कि यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर नाम का कुछ है क्या? अननोन है, रिटर्नेबल पैकेज, थर्ड पार्टी प्रोसेस सर्विसेज प्रोजेक्ट नेटवर्क कॉस्ट सेंटर के। ओके, तो जस्ट पुट इट एंटर। और अभी क्या हुआ ना सिस्टम, सिमरन आपने देखा, मैंने जैसे भी कॉस्ट सेंटर डाला ना, यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी बोल कर टाइल ऑटोमेटिकली आ गई। तो आप इसमें देख सकते हो कि सिस्टम ने जीएल अकाउंट भी उठा लिया। तो ये कैसे उठाया कि वो कॉस्ट सेंटर को पर्टिकुलर जीएल अकाउंट लिंक रहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ मैंडेटरी तो नहीं है। तो क्या बोल रहा है सिस्टम, अकाउंट असाइनमेंट 4000 रिक्वायर्ड अकाउंट असाइनमेंट फॉर द रिलेवेंट कॉस्ट अकाउंट। तो अभी कॉस्ट अकाउंट भी वो मांग रहा है। तो कॉस्ट अकाउंट इतने सारे यहाँ पे, तो इनमें से कंपनी कोड, अपना कंपनी कोड के लिए तो एक भी नहीं है। अलो नहीं करेगा सिस्टम इसको, पता है, बट फूड ये परसेंटेज इसको डिफाइन ही नहीं है ना अपने कंपनी को। तो इसमें यही दिक्कत है कि यदि वो अपना कस्टम प्लान क्रिएट किया ना, तो कस्टम प्लान वो कंपनी कोड को लिंक रहता है, और कंपनी कोड पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेता है रेफरेंस प्लान को। इसकी वजह से मैं ना कि वो 000 वाला ट्राई कर रहा था, बट अभी वो प्लान रेसिपी में शो ही नहीं करवा रहा है। सो अभी इस सिनारियो में एक और तरीका अपने को यूज करना पड़ेगा। या आप अपना असाइनमेंट कैटेगरी की एक ही जगह पे यूज ट्राई करता है। Just put a none। ओके, सो अभी अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ना सिमरन, बेसिकली वो कॉस्ट सेंटर ही रहता है रियल लाइफ में भी। बट अकाउंटिंग का ये सारे अपने को तो अल्टरनेटिव भी है अपने पास, कॉस्ट अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी अपन लोगों ने चेंज किया। ओके,
तो आप देख सकते हो कि ये इतना ही इंफॉर्मेशन लगता है मैंडेटरी पीआर बनाने के टाइम में। यदि आप चाहे तो यहाँ पे अपना वेंडर कोड भी डाल सकते हो। वेंडर डाला तो जैसे भी मैंने वेंडर डाला चेक किया, तभी भी मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, एक रिक्वेजिशनर का नाम डाल सकते हो। रिक्वेजिशनर क्या रहता है कि एक कंपनी में अलग अलग बंदे रहते हैं, तो हर एक बंदे का अलग अलग नाम रहता है ना, तो यहाँ पे अपन लोग रिक्वेजिशनर का भी नाम डाल सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या रहता है ना, कि समझ में आता है कि ये पीआर किसके और बेवकूफ बना गया है। लेट से कभी कभी क्या होता है, बनाने वाला कोई और रहता है बट बोलने वाला कोई और रहता है। मैनेजर ने बोला है कि मुझे पीआर बना के दो, तो वो सिनारियो में वर्कर तो बना के देता है, बट वर्कर को उतना मतलब कि लेवल का ऑथराइजेशन नहीं रहता है ना। तो अपन लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई के लिए मैनेजर का नाम डाल सकते हैं, फिर या फिर उसका एसएपी का जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी डाल सकते हैं। ओके, और इसका हेल्प बहुत जगह पे होता है, जैसे कि आउटपुट के लिए भी होता है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब कि खाली देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है। ओके, फिक्स वेंडर का तो मैंने बोल दिया। एक है ना सप्लाइंग प्लान, मतलब तो कहाँ पे ये सप्लाई होने वाला है, तो ये भी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन परचेस ऑर्डर भी डाल सकते हैं। सारे ऑप्शनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे। यदि कोई इंफो रिकॉर्ड मेंटेन है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंफो रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे पिकअप कर लेता है। ओके, और यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई टैब में गए ना, तो अपन लोग देख सकते हैं अपना वेंडर ऑटोमेटिकली आ गया, बिकॉज अपन ने ऊपर मेंटेन किया था। ओके, यदि कोई शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है इस कॉम्बिनेशन में, तो वो नंबर यहाँ पे अपेयर करने लग जाता है। और नहीं है, इसका वजह से ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अपन डाल सकते हैं यहाँ पे, जो अपने को डालना है। सो लेट्स पुट अवर क्या था, एस आर एम कुछ ऐसा ही था ना, SRM 1 या 2, एसएमआर था। SMR 1। ओके, तो यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी डाल सकते हैं, बट अभी सिस्टम क्या बोल रहा है ना, ये सप्लायर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफाइन नहीं है, तो अपन लोग 0001 डालते हैं। ओके, तो ये हो गया। सप्लाई प्लान बोले तो कहाँ पे सप्लाई करना है वो प्लान भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट ऑप्शनल इंफॉर्मेशन इतने, बट इतने जो मैंने डाले ये मैंडेटरी थे। तो उसके बाद चेक करो, डॉक्यूमेंट ओके बोल रहा है, तो सिंपली यहाँ पे अपने पास सेव का बटन है, जस्ट पेस्ट इट, सेव इट। अभी क्या हुआ, एक परचेस रिक्वेजिशन बन गया। ओके, सो just put this purchase requisition. ओके, ये है अपना परचेज रिक्वेजिशन नंबर। तो अभी तो क्लियर है सिमरन, अभी तक कोई डाउट वगैरह? हेलो सर। ओके, तो परचेज रिक्वेजिशन का पार्ट क्लियर हुआ कि क्यों बना। अभी अपन लोगों ने सिंपल उसमें क्या डाल दिया, मटेरियल और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। फिर यहाँ पे अप्रूवल लगा देते हैं, या फिर अपन लोग इंटरनली भी उसको चेक करते हैं कि ये इतना मुझे ऑर्डर करना है बाहर से। अभी सीधा MA 23 में गया ना, वही डॉक्यूमेंट ओपन होगा जो लास्ट में क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिटेल है। ओके, तो अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, पीआर तो बन गया। पीआर इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था, RFQ। राइट, परचेज रिक्वेजिशन में कुछ डाउट होगा तो बोल सकते हो सुब्रन अभी। हाँ नहीं सर, अभी नहीं। ओके, सो RFQ जो है ना, वो कौन से टी कोड से क्रिएट होता है, तो सबसे पहले RFQ क्या रहता है वो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। तो RFQ को बोला जाता है सिमरन, इट इज जस्ट रिक्वेस्ट विच विल बी सेंड टू द वेंडर इन ऑर्डर टू परचेज द मटेरियल। एकदम सिंपल इसका डिफिनेशन, ये भी एक जस्ट रिक्वेस्ट है। ये हम लोग वेंडर को सेंड करते हैं, क्यों सेंड करते हैं, मटेरियल परचेस करने के लिए। और दूसरा बोल सकते हैं, दिस विल बी यूज ओनली व्हेन यू आर परचेसिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप उसका रहता है, ये ये कब सेंड होता है, जब हम लोग पहली ही बार खाली वो वेंडर से वो मटेरियल परचेस करें ना, तभी अपन उसको भेज सकते हैं। और उसका डॉक्यूमेंट टाइप रहता है AN। ओके, सो जो डेफिनेशन इज, इट इज अ रिक्वेस्ट
it is a request which will be to the vendor in order to purchase the material. ओके, ये जैसे रिक्वेस्ट है वो लोग अपन बनाते क्यों बनाते वेंडर सॉरी मटेरियल परचेस के लिए। और दूसरा बोला जाता है दिस विल बी यूज्ड when used only when you are fixing it for first time। ओके, ये कब यूज होता है जब हम लोग पहली बार परचेस करते हैं ना मटेरियल वो वेंडर से, तभी एक ही बार ये बनता है खाली RFQ। और इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप एसीपी नहीं दिया हुआ। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप इसका EM। ओके ओके, सो अभी इसके टी कोर्स से मतलब सो इस यहाँ पे भी सीक्वेंस ही है। तो अपने पास क्रिएट के लिए ये में 21 यानी MA41 सॉरी, एंड चेंज के लिए MA42 है, और सेम वे डिस्प्ले के लिए MA43 है। ओके, और एक और एडिशनल है इसमें MA12 जो कि लिस्ट ऑफ RFQ अपन लोग उसमें दे सकते हैं। ओके, ये हो गए उसके टेबल्स। और टेबल सॉरी टी कोर्स, और टेबल्स यदि उसके बोले तो टेबल्स उसमें सेम टेबल्स है जो कि हम लोग परचेस ऑर्डर में यूज करते हैं, EKKO एंड EKPO। ओके, एक रहता है आइटम का, एक रहता है हेडर का। तो जस्ट कंफर्म EKKO फॉर आइटम आई गेस कंफर्म वंस स्लैश NC16N EKKO जो रहता है उसमें अपन लोग हेडर के इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, दिस मीन्स इज फॉर हेडर, एंड ये रहता है आइटम के लिए, आइटम की इंफॉर्मेशन। आइटम बोले हेडर बोले तो क्या रहता है ना कि ऊपर का नाम सारा, और आइटम बोले तो मटेरियल की जो डिटेल्स रहती है वो सारी नीचे वाली। ओके, सो ये दो टेबल्स उसमें यूज किया जाता है सिमरन। और एक और चीज यहाँ पे एक कलेक्टिव नंबर बोल के भी रहता है सिमरन। यदि किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कलेक्टिव नंबर, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि कलेक्टिव नंबर बोले तो इट्स इंडिकेट द टोटल RFQ विल बी सेंड टू द वेंडर। मतलब क्या रहता है ना, एक कलेक्टिव नंबर का फील्ड रहता है, यदि वो फील्ड मेंटेन है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो रिक्वेस्ट मतलब लेट से मैंने 100 पीसेस मुझे ऑर्डर करने हैं, तो मैंने 100 पीसेस का RFQ पूरा का पूरा सेंड कर दिया है, तो इसका मतलब होता है कि कलेक्टिव नंबर एक्टिव है। ओके, और ये मेरे कुछ क्वांटिटी अभी Yogesh, भी just a minute, I'm getting a call. Just a minute. Yes, Yogesh. हम्म, सो ये खाली अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन लोग कि जो जितना पूरा का पूरा कोटेशन है वो सारा सेंड हो चुका है कि नहीं हुआ है। यदि अपन ने 50% कोटेशन भी सेंड किया और उसके बाद इसको एक्टिव कर दिया है, तो सिस्टम बोलेगा अपने पास कि आपका कोटेशन कोटेशन मतलब कलेक्टिव नंबर इंडिकेटेड एक्टिव है, दैट मीन्स कि आपका RFQ पूरा सेंड हो चुका है। ओके, सो अभी RFQ कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो जस्ट कॉपी द ट्रांजेक्शन कोड, गो इनटू द SAP /n ME41। देखो, तो ये इस टाइप का लेआउट अपने को नजर आता है सिमरन। तो यहाँ पे अपने पास दो वे है, ये हम
लोग RFQ के ऑन बिहाफ ऑफ भी आगे जा सकते हैं, और कोई आउटलाइन एग्रीमेंट रहता है ना, जैसे कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट, तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ भी अपन RFQ बना सकते हैं। तो लेट्स पुट हियर दिस वन। तो डेट पहले अपने को डालना पड़ेगा कि कौन सी डेट से पहले मुझे ये मटेरियल चाहिए। तो लेट्स गिव 23 इज माई डेडलाइन डेट। और अभी यहाँ पे मैं रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ने क्या किया ना सिमरन, ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट PR नंबर जो जनरेट हुआ था वो उसने उठा लिया। आप देखोगे कि एंडिंग में 31 है, अपना भी वही है। ओके, तो सिस्टम ने उसको उठा लिया। यहाँ पे यदि मल्टीपल लाइन रहते वो परचेज रिक्वेजिशन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे अपन लोग स्पेसिफाइड लाइन भी डाल सकते हैं, बट अपना एक ही लाइन था तो अपन ने ब्लैंक रखा, सिस्टम उसी को उठा लेगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि परचेज ग्रुप डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा रखना है आपको डॉक्यूमेंट टाइप रख सकते हैं, उसके बाद मटेरियल दे दो, प्लान दे दो, सब कुछ। बट अपने पास एक ही आइटम है उसमें, तो अपन लोग क्या करेंगे ना, सिंपली खाली PR नंबर डालेंगे, PR के अगेंस्ट एक ही लाइन आइटम में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा सब कुछ। सो जस्ट पुट एंटर। अभी यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को ऑर्गेनाइजेशन। सो 0001 इज माई परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम परचेसिंग ग्रुप लेट्स पुट 001 होगा तो ले लेते, ओके है। सो जस्ट पुट इट दिस वन। और अपना भी था ना आपका एक SRE, ओके, सो जस्ट पुट दिस वन। ओके, सो ये अपना वाला ही ले लिया। यहाँ पे एंटर किया तो सिस्टम ने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट ट्रेंड्स फॉर द कलेक्टिव नंबर 16, क्या बोला, नंबर रेंज 60 फॉर ऑब्जेक्ट। सो कुछ अभी नंबर रेंज का इशू हो रहा है शायद यहाँ पे। तो जस्ट पुट रिमेनिंग इंफॉर्मेशन फर्स्ट, देन लेट्स सी। आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड है, ओके। जो डॉक्यूमेंट है ये सर्विस का है कि थर्ड पार्टी का है, तो अपना स्टैंडर्ड का है, तो स्टैंडर्ड चूज कर लिया। डिलीवरी डेट, यहाँ पे अपन लोग कौन सी डेट को अपने को ये मटेरियल चाहिए, सो जस्ट पुट 23 को ही मुझे मटेरियल चाहिए। ओके, प्लांट है अपना SRM2, तो लोकेशन था ROD, तो लोकेशन ROD हो गया, मटेरियल ग्रुप रो रिमेनिंग है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है कि सिस्टम नंबर रेंज का दिक्कत दे रही है। तो डॉक्यूमेंट टाइप दूसरा कौन सा ले सकते हैं क्या रुपये के लिए, let's put this one right now. Please enter the delivery date, deadline date. ओके, ये क्या बोला है ना कि कोटेशन का बाद ही आप परचेस का मतलब मटेरियल लोगे ना, तो इसको थोड़ा बात करो, ऐसा बोल रहा था। विच इज गिवन। तो मैंने क्या किया ना सिमरन, आप देख लो यहाँ पे खाली डॉक्यूमेंट टाइप चेंज कर दिया, बिकॉज उसमें कुछ नंबर रेंज का इशू था। ओके, जस्ट पुट इट एंटर। अगेन इसमें भी इशू है। कौन परचेज सी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके देखें। परचेस ऑर्गेनाइजेशन का सीन नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट टाइप के इश्यूज है, ये ओके। जो डॉक्यूमेंट टाइप्स है ना इनके इशू है। हम्म। यदि आप बोल रहे हो ना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी अपना वेंडर के अगेंस्ट यही था, स्टैंड पे यही इसको यूज करना पड़ेगा। बट बात क्या हो रही है ना, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप दे रहे हैं ना RFQ के, SAP का स्टैंडर्ड दिया है AN, तो AN के अगेंस्ट भी अपने को इशू आ रहा है। आप देखोगे ना, डिलीवर डेट का ये हो गया, क्योंकि ये वाला है, तो इसको द नंबर is 60 for the document type is enter not be defined for the purchasing document type. So ये बार है ना, कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देख लेता हूँ। SPRO इधर RFQ बोल के होगा, RFQ फॉर SAP ERP क्यों लिखा है यहाँ पे। अभी ये सारे अलग अलग नंबर रेंजेस है, तो इसमें से वो कौन सा वाले को टारगेट कर रहा था। हिस्ट्री, हिस्ट्री तो यहाँ पे है ही नहीं, 61 है।
नंबर रेंज का इशू है बट वो भी फिक्स नहीं हो रहा है। अभी इसको फाइल करके क्या करते हैं ना, ऊपर का इंफॉर्मेशन फिलहाल थोड़ा ब्लैंक रखता हूँ। स्टैंडर्ड ही है। तो यहाँ पे से ना एक आरएफक्यू बनता है, तो एक और चीज अपन लोग कर सकते हैं, एसएसएन में जाके इसमें डॉक्यूमेंट टाइप एन डाल के जस्ट चेक करते हैं, तो 13 एंट्रीज है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना सिमरन, कि अपन लोग क्या करते हैं ना, अभी सिस्टम अलो नहीं कर रहा है, तो अपन लोग एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को उठाते हैं आरएफक्यू का। ओके, वहां पे EMA 41 में क्रिएट होता है, आपको तो पता है। तो जैसे भी EMA 42 में गए, तो वो क्या करता है, चेंज करता है। तो मैंने यहाँ पे RFQ नंबर डाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे भी अपन लोग उसके बाद एंड बीच में जाते हैं ना, तो इस टाइप का लेआउट नजर आता है अपने को। ओके, फिर ये लेआउट नजर आने के बाद ओके। क्या होता है ना, यहाँ पे अपना मटेरियल नंबर आ गया अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, 10 पीसेस, ये पूरा उसका इंफॉर्मेशन है। ओके, फिर यहाँ पे ये पूरा होने के बाद अभी जस्ट कैलेंडर डिलीवरी शेड्यूल में गए, यहाँ पे कौन सी डेट को मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल डाल दिया। MA 42, सॉरी। ये अभी इसके बाद है ना, ये अलग अलग सप्लायर, मतलब लेट से ये लाइन है, ये लाइन चलेगी ये सप्लायर को। ओके, अभी RFQ चला गया, ये सप्लायर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट हो गया। सेम में अलग अलग सप्लायर के लिए अपन लोग अलग अलग नंबर जनरेट कर देंगे। ओके, सो अभी आप देख रहे हो ना, सिंपली क्लियर है कि कॉम्बिनेशन ये सप्लायर के लिए ये RFQ नंबर जनरेट हुआ है। वैसे ही मुझे एक पेन मान लो कि मुझे 3 सप्लायर से परचेस करना है, तो तीनों का अलग अलग RFQ में बना के दूंगा। ओके, और अलग RFQ हो गया, फिर उनके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, सिंपली आगे पहले थेरोटिकल ले लेता हूँ फिर देखता हूँ। फिर अभी उनके पास चला गया, फिर वो लोग क्या करते हैं ना, MA 47 में उनका कोटेशन बेचते हैं। कोटेशन में क्या है, सिंपली RFQ नंबर डाला जो आपने लास्ट ओपन किया, वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन था, लैपटॉप कितने पीसेस था, 10 पीसेस, और 10 पीसेस को वो लोग अपनी प्राइस दे देंगे कि कितना रुपए देना है। तो लेट से उन्होंने डाल दिया 1,000 रुपये वो मटेरियल के प्राइस है। ये कौन डालता है, ये वेंडर डालता है। यदि वेंडर रेसिपी नहीं यूज कर रहा है, तो वो अपने परचेसिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा कि वो 100 रुपये में भेजेगा, तो अपनी SAP टीम ये यहाँ पे मेंटेन करके देगी। बट ये एक्टिविटी किसका है, वेंडर का एक्टिविटी है। ओके, तो वेंडर ने जैसे भी प्राइस सजेस्ट किया, ओके। तो वो प्राइस अपन लोगों ने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो ये पर्टिकुलर वेंडर के लिए लेफ्ट से मैंने दे दिया 1,000 रुपये, और अलग दूसरा एक वेंडर है उसने दे दिया 2,000 रुपये, तो उसका दूसरा RFQ रहेगा। ओके, तो ये दोनों अलग अलग वेंडर ने अलग अलग RFQ नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद फाइनल रहता है कि प्राइस कंपैरिजन का। ओके, तो प्राइस कंपैरिजन क्या होता है ना, MA 49 से प्राइस कंपैरिजन होता है। फिर यहाँ पे अपन लोग सारे कोटेशन नंबर एक टाइम में डाल सकते हैं। लेट्स से कि अपना 3 कोटेशन है, सो अपन लोग क्या करते हैं ना, मैंने तीनों को उठा लेता हूँ। चलो लेट्स से 2 कोटेशन है, तीन की जगह 2 डालते हैं। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन SRM डाल रहा हूँ ना भाई, कोटेशन नंबर डाल रहा हूँ। ओके, ये कोटेशन नंबर आ गए। अभी यहाँ पे सप्लायर का डालो, या फिर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा मे बी। तो जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, प्लीज नो सिलेक्ट पॉसिबल एंट्रीज, क्या बात कर रहे हैं, गिव ऑल इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जीक्यूट। डबल एंट्री भी होगी ना, तो इसका मतलब जैसे भी एक ही रेट करेगा, डोंट वरी। सो डमी एंट्री ऐसे भी उड़ा देता है वहां से। यहाँ पे कलेक्टिव नंबर को निकाल दिया। कलेक्टिव नंबर वो मैंने बोला ना आपको, कलेक्टिव नंबर जैसे इंडिकेटर रहता है, कि उसमें पता चलता है कि RFQ 100% सेंड हो चुका है कि नहीं। तो इंक्लूडेड डिस्काउंट वगैरह ये सब कुछ हो गया। मे भी इसका है ना ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है, इसको वजह से ये दिक्कत दे रहा होगा। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। ये करेक्ट, इसका ऑर्गेनाइजेशन अलग था। ओके, सो जैसे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के बाद सिमरन ये देखो, और मैंने कोटेशन भेजा था 2 सप्लायर को। एक ने एक दे रहा है मुझे
कितने 1000 रुपीज में दूसरा दे रहा है 500 रुपीज में, तो 10 पीसेस का कितना हो गया 10,000, इसका 5,000। तो अपन ने कौन सा फॉरवर्ड बढ़ेगा इनमें से? इसका 50,000 हो गया, बिकॉज एक पीस का इसने 5,000 लगा दिया है। तो दोनों में से कौन सा रीजनेबल लग रहा है अपने को? ऑब्वियसली पहले वाला है। बराबर। तो इसी की बेस पे अपन हम्म लोग फिक्स करते हैं कि मुझे इससे मटेरियल परचेस करना है, दैट्स। हम्म। इसका इसका मीनिंग रहता है आरएफक्यू। ओके, तो आरएफक्यू अब तक तो पूरा क्लियर हो लेकिन गया ना? हाँ। हाँ, क्लियर, बाकी फैक्टर्स भी तो डिपेंड करेंगे ना। हम्म। मतलब सिर्फ वैल्यू ही एक फैक्टर नहीं रहेगा। जैसे अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम डिलीवरी डेट के ऊपर भी कर सकते हैं फिल्टर। डिलीवरी डेट तो उधर दिया था ना स्टार्टिंग में, कि उनको बोला गया था कि मुझे मटेरियल इस डेट अच्छा, से वो पहले ही चीज फिक्स चाहिए। रहेगी। देखो, ठीक है। अपन लोगों ने जब आरएफक्यू बनाया ना, उस टाइम में सिस्टम ने हम्म मुझे क्या, अपने को दो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी पूछी। एक रहती है डेडलाइन डेट। डेडलाइन डेट हम्म। बोले तो क्या, कि ये डेट से पहले मुझे मटेरियल चाहिए। यदि वो डेट अच्छा, से वो पहले वो डेट्स मटेरियल को नहीं देगा ना, ओके। तो सिस्टम उसको अलो ही नहीं करने देगा, उसको रिक्वेस्ट को कोटेशन क्रिएट करने के लिए। उसको उसके बेस आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके ओके, गॉट इट। ऐसा। और डेडलाइन डेट के बाद एक ये डेट भी रहता है अपने पास, कि गुड रिसीव का डेट, कि डिलीवरी डेट, कि मुझे कौन सी डेट को मटेरियल चाहिए, तो वो डेट भी वहाँ ओके पे डालनी पड़ती क्रिएट के टाइम पे। ओके। अपन लोग ने आरएपीओ क्रिएट किया था, आपने देखा था ना, वो इंफॉर्मेशन मांग हम्म। रहा था सिस्टम। एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो, ये आरएफक्यू डेट था कि मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ। डिलीवरी डेडलाइन डेट है कि मुझे ये यहाँ इस तारीख तक मुझे कोटेशन आ जाने चाहिए आपको। इसके बाद में ओके कोटेशन आपकी वैलिड नहीं रहेंगे। और ये क्या था, ये डिलीवरी डेट था कि ये आपका कोटेशन इस तारीख को आ भी गया ना, बट मुझे मटेरियल इस तारीख तक आना ही चाहिए मेरे पास। ओके। हम्म। तो दोनों सिनारियों में अपन लोगों ने वैलिड किया था। ओके, गॉट इट। ओके। तो हम्म। इसको बोलते हैं आरएफक्यू सिमुलेशन। सो लेट्स गो इनटू द डॉक्यूमेंट। सो just put it in the अपना थर्ड एंड फोर्थ। तो अपने को अभी पता चल गया कि मटेरियल किससे परचेस करना है। सो जस्ट पुट इट इन करिए। ओके। सो अभी आरएफक्यू का क्लियर हो गया। अभी अपन लोग क्या करते हैं सिंपली, कि नेक्स्ट स्टेप है अपना वाला परचेस रिक्वेजिशन बनाना, गुड सॉरी परचेस ऑर्डर। ओके। सो जस्ट पुट इट हियर। सो इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको पीओ बना दिया। ओके। सो सिमरन, अभी यहाँ पे देखा था अपन लोगों ने, इसको इसको दोनों सेम है। एज इट इज मैं कॉपी करता हूँ आपके लिए। ये दोनों सेम है, खाली डिफरेंस क्या होगा ना, इधर गया, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। दोनों सेम डॉक्यूमेंट है, खाली ये क्या हुआ था, इंटरनल पर्पस के लिए बनाया था। अभी अपन लोग जो बना रहे हो वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए बना रहे हो, वो किसको जाएगा, वेंडर को जाएगा। राइट। तो खाली डिफरेंस होता है कि ये एक्सटर्नल रहता है और अब वो वाला इंटरनल था, ये खाली कंपनी अपने खुद के लिए यूज करते हैं, और इसको अभी सप्लायर को सेंड करेंगे। So definition same है, it is an external document which will be created to purchase the material. ओके। और अभी यदि किसी ने पूछा कि पीओ हम लोग कितने टाइप से बना सकते हैं, तो पीओ बना सकते हैं अपन लोग टू टाइप से। एक रहता है कि आप मैनुअली भी बना सकते हो, MA21 से। ओके। और एक रहता है ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली पीओ के लिए अपने को मटेरियल मास्टर में परचेसिंग व्यू में है ना, ऑटोमेटिकली पीओ का ऑप्शन रहता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। और सेम ये वेंडर मास्टर में भी ऑटोमेटिकली पीओ का ऑप्शन रहता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। ओके। और वैसे ही इंपोर्ट रिकॉर्ड बना दो, कोटेशन बना दो, अपना सोर्स लिस्ट जो रहता है ना, सोर्स लिस्ट मेंटेन कर दो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। ऑटोमेटिक पीओ। ओके। सो ये दो तरीके होते हैं उसके। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पीओ क्रिएशन के ट्रांजेक्शन कोड क्या है, तो ट्रांजेक्शन कोड इसके, ये कोड बोले तो ट्रांजेक्शन कोड MA21N, ये रहता है सेम वे अपना क्रिएट का। MA22N ये रहता है अपना चेंज का। MA23N ये रहता है अपना डिस्प्ले का। और यहाँ पे भी सेम वैसे रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए MA29N दिया गया है।
और एक और है ME2L को, ME2L ये बराबर, जैसे कि इसमें भी था ME2L, क्या बोलते हैं PR में, सेम इसमें भी ME2L रहता है लिस्ट के लिए। ओके, सो ये उसके टी कोड्स और उसके टेबल्स यदि बोले, इसमें दो ही टेबल यूज होते हैं। एक ही EKKO, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा था, EKKO फॉर द हेडर, और दूसरा है EKPO फॉर द आइटम। ये दो टेबल इसमें यूज होते हैं। क्लियर सिमरन, ये आता? हाँ जी, क्लियर है। ओके, और दो और लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है ना कि यदि PO में PBOO ये कंडीशन टाइप यदि आ रही है ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब क्या रहता है ना, व्हेन यू मेंटेन द info record at that time, at that point of time, system will capture the condition type PBOO। इसका मतलब क्या है ना सिस्टम, कि यदि हम लोगों ने इंफो रिकॉर्ड यदि मेंटेन किया है, इंफो रिकॉर्ड में आपको मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया था प्रीवियसली, इंफो रिकॉर्ड में अपन लोग प्राइस मेंटेन करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है ना, सिस्टम इंफो रिकॉर्ड से प्राइस पिकअप कर लेता है और ये कंडीशन शो करती है। यदि ये कंडीशन शो नहीं कर रही और प्राइस अपने को मैनुअली डालना है, इंफो रिकॉर्ड आपका मेंटेन नहीं है, तो उस सिनेरियो में PBXX एसएपी ने कंडीशन टाइप दिया है, उसका मतलब रहता है info record maintain नहीं है। So maintain the info record और maintain info record। ओके, ये क्लियर है ना? info record यदि maintain है तो PBO आता है, नहीं है तो PBXX आ जाता है। ओके। ओके, सो अभी अपन लोग है ना, जैसे भी चेक करते PO कैसे बनाते हैं मैनुअली पहले। PO जाओ आगे कि क्या करते कर लो, यदि ज्यादा होगा माइंड में तो कंटिन्यू करते हैं, यदि ऊपर से जाने लग गया होगा तो कल करेंगे। बोलो आप। देख लो, जैसे भी, चलो कल ही कर लेते हैं फिर। इसको सिखाने को गए तो पूरा भी ले सकते हैं, बट वो आपके माइंड में भी जाना चाहिए उतना, तो वही हम्म। इशू है। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करो आप, लेट्स सी। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का अभी कैसे सेंड करें, उसने एक ईमेल डाला है, एक बार उसको देखता हूँ मैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना मगर सिमरन की ये पूरा की, कल अपन लोगों ने ये टॉपिक लिए थे पूरे ऊपर वाले। जी जी। ये देखो, ये पूरा रट लो। हाँ, प्रोक्योरमेंट साइकिल किसी ने पूछा तो इस ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना सिमरन, ये पूरा फिल्टर करके लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि बोलने में एकदम इजी जाए और सामने वाले को समझने में इजी जाए। यदि आप कुछ बुक्स रेफर करोगे, कुछ रेफर करोगे ना, तो ये थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में रहते हैं, तो अपने को रीड करने में ज्यादा टाइम लगता है और एक्सप्लेन करने को भी वैसे टाइम कंज्यूम कर जाता है, तो इसकी वजह से इजी जाता है। ओके, जस्ट सेव इट नाउ। सो कल रहेगा अपना वाला PO का क्रिएट PO मैन्युअली। ये रहेगा अपना 23 में नंबर ऑफ एक्टिविटी 30। ओके,